Good evening, my dear students. Welcome to today's session for auditing and assurance subject. I can see that a number of you have already joined. In fact, many of you have joined at 5:50. That's good. So good evening, Hitesh, Sudhanshu, Banreddy, Nilabju, Meghna, Siddharth. Others also please quickly join. Now, students, I hope that section 141 that we have done in the last session is clear to all of you. And I also expect that the homework that was given to you, that is to read the module till where we have covered in entirety, including the illustrations and examples. I hope that you all have gone through all those. Okay? And if any of your queries is still there with respect to section 141 and section 139, like 139, we have covered only 4 subsections in the last session. So you can all send them. I will take those queries at the end of the session, right? Now, before starting with section 139, like completing the section 139, let us just quickly give 5 minutes to section 141. As in the last session, many of you had sent a query at the end of the session that, ma'am, in the next session, please revise section 141 for 5 minutes so that we can see as to how much we have learned. Okay? So a quick revision of section 141, and then we'll be completing today section 139 and, if time permits, section 140 also. Okay? So let us start with section 141, a quick revision. Okay? Just a minute. So abhi tak we have covered section 141. So 141 section, the name is eligibility, qualification, disqualification of an auditor, and it has 4 subsections. So subsection 1 says who is eligible only if he is a chartered accountant, and a firm can be appointed in the name of the firm as auditor if majority of the partners practicing in India are qualified as aforesaid. That is, aforesaid means jo upar likha hua hai, that they are also what? Chartered accountant. Okay? Second subsection says that firm including LLP can be appointed as auditor, but only the chartered accountant partner is authorized to act and sign on behalf of the audit firm. Clear? Subsection 3, we read this subsection along with Rule 10 of the Companies Audit and Auditor Rules 2014, and there are 9 clauses to this subsection, which says that the following persons are not eligible to be appointed as the auditor of the company. Okay? So a body corporate other than LLP, officer employee of the company, person who is partner or in employee or is in employment of officer employee of the company. Okay? Clause number D, how you have to learn this, there are 3 subclauses. So it starts with the person who or his relative or partner, ये कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसके साथ? कंपनी, ठीक है, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग. What are the 3 transactions? Having any security, holding any security in these companies, लेकिन relative को till the face value of 1 lakh it is permitted, and in case it exceeds face value of rupees 1 lakh, then a 60 days grace period is given to auditor to take corrective action. But ये 60 days वाला concept, 1 lakh face value वाला concept is not applicable for auditor himself or the partner. अगर ये दोनों they hold any security of even a very less amount, then ineligibility will be there. ठीक है? Then if person, relative or partner, इन्हीं सब companies में क्या करते हैं? They are indebted for an amount in excess of 5 lakhs. Or the third point is what? They have given guarantee for a third person to all these companies for amount exceeding rupees 1 lakh. Clear? So that was clause D. Clause E says a person or a firm directly or indirectly has business relationship. Business relationship kahan define kiya hai? Rules mein. That is any transaction for commercial purpose, except there are 2 cases of exception where ineligibility will not be there. What are those cases? Where the CA is providing the permitted professional services, permitted under the Companies Act, the Chartered Accountant Act 1949, and the rules regulations made there under, to the client organization, then this is an exception. In that case, there will be no eligibility. Okay? I gave you example of tax audit. Okay? Then if the client is giving any
service, product or services in the ordinary course of business, ठीक है, at arm's length price to the CA as a customer, है ना, to the audit firm as a customer, and companies engaged in telecom, airlines, hospitals, hotels, and other similar business. ठीक है. F says if the relative of the auditor is a director or is in employment of the company as a director or KMP. G clause is with respect to the ceiling on the number of audits, or it also deals with what if a person, a chartered accountant, is in full-time employment elsewhere, he cannot be appointed as an auditor of a company. Okay? And 20 is the maximum number of audits that a person can, that a partner or an individual auditor, he can hold, except, and in calculating this 20 limit, the one-person company, dormant company, small company, private company having paid up share capital of less than 100 crores, they shall not be counted. Clear? Then if a person has been convicted of a court of offense involving fraud, right, and a period of 10 years has not elapsed then from the date of conviction, then such person is not eligible. And last but not the least, if the person or his audit firm, it is rendering to here the the company, its holding or subsidiary, only these three are there, the services which are mentioned in section 144. Such services can be rendered directly or indirectly. What are the services? You can have a look. Okay? And we have seen that if a person himself is doing accounting and bookkeeping, obviously he cannot audit. Same way, internal auditor cannot be the statutory auditor. Hana? So you can have the look at all these 9 points. And subsection 4 says that if any of the disqualification has incurred after the appointment, then the auditor shall immediately vacate the office as auditor and a casual vacancy shall be deemed to have been created. Now, how to fill casual vacancy? Section 139 subsection 8 is the section for this, and we'll be discussing it today. Okay? So I think I have taken just 4-5 minutes and the entire section is revised. Clear? Okay. Now, section 139 relating to appointment of auditor, whereby we saw that appointment of auditor can be understood by dividing it into two parts. The first bifurcation is appointment of auditor, the first auditor, and appointment of subsequent auditor. Then we saw what is a government company. It is defined in section 2 clause 45 of the Companies Act, HANA 2013. And first auditor in case of a government company, in case of other than government company, subsequent auditor in case of company and other than government company. Okay? In case of first auditor, other than government company, section 139 subsection 6 is the relevant section, and appointment will be made by board of directors within 30 days of registration. In case of failure by the board of director, they will inform the members who shall in an AGM within EGM, extraordinary general meeting, within 90 days. In the within next 90 days, they shall appoint the first auditor, and the first auditor will hold office till the conclusion of the first AGM. Clear? We have seen who is a CAG, right? Who is CAG? And in case of government company, CAG plays a very important role in appointment of auditor. Clear? So section 139 subsection 7 is there with respect to appointment of first auditor in case of government company. So appointment is to be made by CAG within 60 days from the date of registration. In case CAG fails, then next 30 days to BOD. In case of failure on behalf of the BOD, then members are given the next 60 days. And again, the first auditor so appointed, he shall hold office till the conclusion of the first AGM. Okay? Now, with respect to subsequent auditor, I told you that in the first year of registration incorporation of the company, the auditor so appointed is first auditor. He holds office till the conclusion of first AGM. Now, the auditor who is appointed here, that is at the first AGM and thereafter, is what? Subsequent auditor. Okay? So in case of government company, again CAG, and the time period is within 180 days from the commencement of year, and he shall hold office till the conclusion of the AGM. Right? In case this was section 139 subsection 5.
Section 139 subsection 1 deals with appointment of subsequent auditor in case of other than government company. So every company needs to appoint an auditor in the AGM. The members appointment will be made by the members in the AGM, and the auditor so appointed, he shall hold office from that AGM where he is appointed, considering it as the first AGM till the sixth AGM. And if you remember, I told you that if this is the first AGM till the sixth AGM, so how many years are there? 1, 2, 3, 4, 5 years. So for a term of 5 years, an auditor is appointed, right? But there are certain conditions that is to be fulfilled, and where it is mentioned as prescribed. So where is it prescribed? In Rule 4. Okay? So Rule 4 says that a written consent will be taken. So Section 139 subsection 1 says that a written consent will be taken and a certificate will be taken from the auditor with respect to these conditions which are prescribed in Rule 4. So auditor will give a certificate that he is eligible and he is not disqualified under the Companies Act, the CA Act 1949, or the rules regulations made thereunder. The appointment is as per the term provided under the Act. The appointment is within the limits. Section 141 subsection 3 clause G. And the list of proceedings against the auditor, the firm or the partner for professional matters of conduct as disclosed in the certificate is true and correct. I told you why correct here, why not fair. Opinion थोड़ी ना दे रहे हैं. So not fair, true and correct. Facts बता रहे हो ना. Further, the proviso says that the company, there is a responsibility on the company to inform the auditor of his appointment, that auditor you have been appointed, and the company has to file notice of such appointment to the registrar within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed. And I told you that the form that is to be filed with the ROC is ADT 1. So let me just show you the form for just your reference. Just a minute. So Rahul is saying, ma'am, pura section yaad ho gaya. That's good. See, students, with respect to section 144, so Charu has a doubt. If any of the permitted services is to be provided by the statutory auditor, then the same needs to be approved by the board of director or the audit committee, as the case may be. Jahan audit committee hai, to audit committee bhi approve karega. ठीक है? And the services which are prohibited by section 144, वो तो services render कर ही नहीं सकते, है ना? Right? Charu, is your doubt clear? No. Services rendered under section 144 cannot be rendered even if the BOD or the audit committee will not approve it, na? Tax audit या any other permitted services को अगर render करना है, then the approval from BOD or audit committee will be required. 144 की services are all together. They are prohibited. वो तो render कर ही नहीं सकते, right? Clear, Charu? So what happened? Just a minute. Charu, is your doubt clear? So when that file will be open, I'll show you ADT 1 for just your reference. Okay? Now let us move on to the next part, which is filling of casual vacancy. Okay? So section 139 subsection 8 is there. So what is a casual vacancy? See, when the auditor is leaving the office as an auditor before the completing his term, before completing his tenure as an auditor, है ना? जितना time के लिए he was appointed, उससे पहले he is leaving the office of an auditor. It can be due to death of the auditor, due to resignation. And if you remember, we have done section 141 subsection 4, where it is mentioned that if any of the disqualification is incurred, it will be deemed that a casual vacancy has been created. So it can be due to that also. Now in that situation, who is responsible to fill that casual vacancy? Because वो auditor तो चला गया ना, casually vacate करके, देखो death हुआ है but obvious है ना? Disqualification हुआ है, auditor is leaving that
position. ठीक है. Resignation है, if the auditor has resigned, then also there is what, casual vacancy. And you will see in case of resignation there is a duty on the company as well as on the auditor, because देखो resign कर रहा है ना, death होती है समझ आता है, डिस्क्वालिफिकेशन होती है समझ आता है कि ठीक है, he is leaving the office before the expiry of the term. But resignation है, then there must be something fishy ना, why the auditor is resigning, the shareholders must know ना, है ना. So we will see that there is some responsibility on the auditor himself. ऐसे थोड़ी ना auditor चला जाएगा कि मुझे काम नहीं पसंद हो रहा, I am leaving the work, ऐसे थोड़ी ना होता है. He is an expert, he is a professional, professionally काम करना है ना. So if there is a reason that the auditor is resigning before the expiry of the, or before completing the term as an auditor, then there is certain responsibility on the auditor as well as on the company, which we'll be doing just now. ठीक है. So Sudhanshu, with respect to actuarial service, I'll take this at the end of the session. ठीक है. Sudhanshu, please remind me at the end of the session. ठीक है. Section 139 subsection 8 casual vacancy क्या होते हैं, ये समझ आ गया. That auditor is leaving the office as an auditor before completing his term. It can be due to death, resignation, or attracting any of the disqualification. ठीक है. Now, in case of a casual vacancy, then again we can study it by bifurcating it as for a government company and for other companies. ठीक है. So let us first start with government companies. So what is the relevant section? Section 139 subsection 8. ठीक है. So it says that in case of a casual vacancy, the same will be filled by, अच्छा ठीक है, I'll not show you the screen and you also do not refer to the module. Tell me, in case of a government company, casual vacancy होता है, तो who is first of all responsible for appointing the auditor? अब तो you have done first auditor, subsequent auditor. So according to you, as per your understanding, you tell me, in case of a government company, in case of casual vacancy, who must be given the responsibility to fill the such vacancy? Quickly, I am waiting for your replies. So Karthik, Areva, Ben Reddy, Hitesh, Siddharth, Charu, Rahul, Sri Ram, Aditi, Neha, Suchitra, Sudhanshu, all are correct. CAG. ठीक है. So CAG has to fill that vacancy within 30 days. ठीक है. And in case of failure by the CAG, the board or director shall fill that vacancy within the next 30 days. So CAG को बोला गया है 30 days के अंदर, and if they are unable to fill such vacancy, then board of directors को बोला गया है within the next 30 days. So Gehani, Hariram, Siddharth, absolutely correct. Sarthak, everyone, Chitala, Khushi, Neha Verma, Sudarshan, absolutely correct. ठीक है. So this is simple, है ना. Now other company, ठीक है. In case of other company, the responsibility is given to board of directors and a period of 30 days is given. ठीक है. Now I told you that in case of resignation, in case of casual vacancy, because the reason is what, resignation by the auditor, there is certain responsibility. अब देखो, just try to understand why this provision is there. See, देखो, basically company में कौन होता है? Company is regulated by the shareholders and the directors. Shareholders अपना fund लेके आते हैं company में, give it to the directors, they perform the activities and give back to the shareholders in the form of dividend. ठीक है. Now, board of directors over responsibility towards the shareholder, they need to show the books of accounts that देखो हमने सारा काम ठीक से किया है. How will that be possible? Independent CA से audit करवाते हैं, auditor से. ठीक है, clear है. Now that auditor is resigning, है ना. So just imagine that the auditor is resigning before completing his work. So the shareholders must know ना as to what is the reason. ऐसा तो नहीं है कोई fraud हुआ था जिसके लिए board of directors are not accepting it or they are not taking the responsibility, है ना. So what is the reason? The shareholders must know it. So where the casual vacancy is by way of resignation, such appointment, see such appointment मतलब existing auditor तो चला गया ना, उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करना है. So the such appointment of appointment हो रहा है, it shall be approved by the members in the general meeting. ठीक है. And what is the time period? 3 months time period has been given. That once the
the board of director fills the vacancy within 30 days from such casual vacancy, then within 3 months from the date of the recommendation by board, such recommendation shall be approved by the members in the general meeting. Within 3 months, है ना? शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए ना कौन गया, कौन आ रहा है, व्हाट इज द रीजन. ठीक है, समझ आता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल कर सकते हैं, बट वंस दे रिकमेंडेड इन द बोर्ड meeting, then within 3 months from such recommendation, such appointment to fill the casual vacancy needs to be approved by the shareholders within 3 months. Clear? Simple है, logical है. Quickly send in your reply. समझ आता है? यही है 139 subsection 8 plus एक और point है. क्या point है? The auditor so appointed here shall hold office till the conclusion of next AGM. कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम तक. ठीक है, अब बताओ, एनी डाउट? सेंड इन योर रिप्लाई. समझ आ रहा है? अलोंग विद द लॉजिक, रीजनिंग भी समझ आना चाहिए ना, एंड लर्न भी होना चाहिए. तो 139 सबसेक्शन 8 में हमने क्या देखा? गवर्नमेंट कंपनी में 30 डेज सीएजी नहीं कर पाते तो 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट्स इट. नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज तो दिया, बट फिर 3 months में the same should be approved, the board's recommendation should be approved by the members in the general meeting convened within 3 months, and the auditor so appointed, he shall hold office till the conclusion of the next AGM. ठीक है, so let me just have a look at your queries, then we'll start with the next section. So Rahul is saying, ma'am, crystal clear. Yes, Siddharth. See, if casual vacancy is caused by way of death, then it is to be filled by board of directors within 30 days. For resignation, general meeting will be convened within 3 months from such board recommendation. Clear? Sunil Labjo, Gihani are saying, ma'am, clear. Suchitra is saying it's clear. Okay. See, Sarthak, with respect to audit committee ना, section 139 subsection 11 is there, जो बताता है कि कैसे करना है अपॉइंटमेंट और फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी. ऑडिट कमिटी का क्या रोल है? ठीक है, तो सार्थक योर डाउट विल बी क्लियर टुडे इटसेल्फ व्हेन वी विल कवर दिस एंटायर सेक्शन ऑफ section 139 ऑन 11 subsections. ठीक है, so clear. ठीक है, now I told you that there is a responsibility when the auditor resigns, there is responsibility on the auditor as well as the company. तो कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमने देख लिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज में करना है अपॉइंट, और उसको 3 months में जनरल मीटिंग में मेंबर्स विल अप्रूव दैट. ठीक है, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट. आई कैन सी अ नंबर ऑफ क्वेरीज. प्लीज डोंट स्टार्ट मेकिंग केसेस कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा. जो बुक में, जो लॉ में आपको दिया गया है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा होगा, अगर इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ना, मतलब डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग योर ओन क्वेश्चंस, दैट इज गुड. But in the last session also, I have told you that after the session, go through this module in entirety, like whatever we'll be covering today. Cover the module, including all the illustrations, all the case studies, and then you will see that ये जो questions आ रहे हैं ना, ये या तो mind में आएंगे नहीं, because आपके concepts clear हो जाएंगे, या अगर आएंगे तो you will yourself be able to answer. ठीक है, तो जो cases actually Companies Act 2013 में दिए गए हैं ना, try to concentrate on that. ऐसे मत, डोंट आस्क कि मैम व्हाट विल हैपन अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, है ना. तो लेट अस कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013, बिकॉज ये तो डेफिनेटली आ सकता है एग्जाम में, है ना, बिकॉज ये कंपनीज एक्ट में दिया गया है. ठीक है, नाउ देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑडिटर इटसेल्फ. ऑडिटर ऐसे थोड़ी ना बोल सकता है कि मुझे काम नहीं पसंद आ रहा है, आई एम लीविंग दिस वर्क एंड आई विल नॉट गिव द ऑडिट रिपोर्ट. देखो, ऑडिट किस लिए हो रहा था? The only end product that the company needed, the shareholders needed, and the auditor wanted to give is what? Auditor report. अब auditor क्या कर रहा है? Audit report देने से पहले ही he is resigning, है ना, work complete होने से पहले he is resigning. तो why? ठीक है,
So as such our section 139 is not completed, but since section 140 subsection 2 and subsection 3 relates to casual vacancy by resignation, so I am taking up those section here. So section 140 subsection 2 and 140 subsection 3, ठीक है. So if there is a casual vacancy by a way of resignation, company की क्या duty है, we have seen it. Now what is the duty of the auditor? Auditor ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, है ना. So there is a responsibility. The section says that the auditor shall, mandatory, auditor के पास कोई option नहीं है कि if he wants he can file, if he doesn't want he can leave it. No, the auditor shall file within a period of 30 days from the resignation a form, number is what, ADT 3, with whom ROC and company, and in case of a government company with ROC, with company and CAG. And where is it mentioned? Rule 8 of the company's audit and auditor rules 2014, ठीक है. ADT 3 में क्या मेंशन करना है? Auditor will be mentioning what is the reason बताना पड़ेगा ना. You are leaving the office of an audit, statutory auditor of a company. Why? What is the reason? And other facts. And student, this responsibility on the auditor is so important that if the auditor fails to file ADT 3 with the ROC or the company or the CAG, then as per section 140 subsection 3, in case of such failure, auditor will have to pay a penalty of rupees 50,000 or the remuneration whichever is less, plus in case of continuing default, continue हो रहा है वो default, then a penalty of rupees 500 per day, and all this will be subject to maximum of rupees 2 lakhs. समझ आता है? Let me just see if that PDF is working now. Just a minute. Just a minute. I just want to show you what ADT 3. ADT 3. Just a minute. There is some problem in my PDF. Sure. So maybe after the break, I'll show you all the forms for your better understanding. Okay? So where were we? So we were doing section 140, subsection 2 and subsection 3 in case of casual vacancy by resignation. So we saw that the auditor shall file within 30 days of such resignation ADT 3 form with the ROC company, and in case of government company with the CAG also. In ADT 3 form, the reasons why the auditor is resigning and the various facts that the auditor wants to mention are, there is a space to write all those things, okay? And in case of failure, there is a penalty on the auditor of 50,000 or remuneration of that audit assignment, whichever is less, plus in case of continuing default, rupees 500 per day, subject to maximum of rupees 2 lakhs. So is it clear? No nilabjo. The responsibility is there on the auditor when he is resigning. Okay? So as such, when on completion of the term, in this section, there is no responsibility. Okay? Students, I just wanted to show you the module, but it is not opening. Shri Ram, yes, in the module, na? Just a minute.
So my PDF file is hand. So chalo, we will have a look at the PDF after the break. Okay? So Sri Ram, with respect to your doubt in the case study, amount of rupees 5 lakhs has been mentioned. You can just cut 5 lakhs and you can write 2 lakh there on page number 10.15. There is earlier that amount, the amount of 2 lakhs was what? 5 lakhs. So there is a mistake. You can just cut that 5 lakh and write 2 lakhs. Okay? So Shri Ram, is it clear? Okay, is it clear? Chalo. ठीक है. So this was section 140 subsection 2 and subsection 3. ठीक है. I hope the word file is clear. है ना? So see, this is a summary of section 140. So resignation by auditor of a government company or company controlled by SG or CG. So auditor, it has to file form ADT 3 within 30 days of the resignation with the company registrar and CAG. ठीक है. Resignation by auditor of other company, auditor has to file form ADT 3 within 30 days of resignation with company and registrar. यहाँ पर extra क्या है? CAG. ठीक है. In case of failure, the auditor shall be liable to a penalty of 50,000 rupees or the remuneration of the auditor, whichever is less. ठीक है. And in case of continuing failure, with further penalty of 500 rupees for each day after the first day during which such failure continues, subject to a maximum of rupees 2 lakh. And where is it given? In section 140 subsection 3. Clear? ठीक है? Clear? So yes, in the latest edition, Pooja, this 5 lakhs has been corrected as 2 lakhs, but who all are referring to the earlier edition, please see, it is what? 2 lakhs. ठीक है? In the case study. ठीक है. So maximum penalty is what? 2 lakhs. Is it clear? So what all we have covered? We have covered section 139, subsection 6, subsection 7, subsection 1 and 5. And just now we covered section 139, subsection 8. Okay? Now, section 139, subsection 10. It says section 139, subsection 10. And this is section 139, subsection 9. So section 139, subsection 10 says that if at a meeting, at any annual general meeting, if you remember, हमने क्या पढ़ा था? At every AGM, every company shall appoint the auditor at every AGM and he shall hold office till the conclusion of the 6th AGM. ठीक है? Section 139 subsection says that where at any AGM no auditor is appointed or reappointed, it will be assumed that the existing auditor will continue as the auditor of the company. किसी को भी appoint या reappoint नहीं किया, तो existing will continue. Simple. This is contained where? In section 139 subsection 10. Now section 139 subsection 9, very important. It says that a retiring auditor may be reappointed at an annual general meeting if. So basically it says that in these 3 cases, the retiring auditor can be reappointed. Okay? When he is not disqualified for reappointment. So if he is disqualified for reappointment, he cannot be reappointed. If 141, section 141, subsection 3, if any of the disqualification is attracted, तो उसको reappoint नहीं कर सकते. ठीक है? If he has not given the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed, a retiring auditor can be reappointed if उसने खुद से लिख के नहीं दिया कि मेरे को काम नहीं करना है. Obviously ना, if he himself gives his unwillingness to be appointed, तो उसको थोड़ा reappoint कर दोगे. So when can a retiring auditor be reappointed? When he has not given
the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed, and all the three conditions should be satisfied. A special resolution has not been passed at that meeting appointing some other auditor or expressly providing that he shall not be reappointed. See, we will be doing section 140 subsection 4, है ना, वहां पर आपको ये समझ आएगा अच्छे से. तो अभी के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन 139 सबसेक्शन 10 क्या बोलता है कि इफ नो न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू एज द ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ईयर. ठीक है. सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 क्या बोलता है, दैट अ रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड इफ ये तीनों चीजें हैं. व्हाट, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, है ना. एंड सेकेंड पॉइंट में the auditor is not saying कि मेरे को काम नहीं करना है as an auditor, and third point में the company is not saying that हमें काम नहीं करवाना है from you as an auditor, in a very simple language. ठीक है. So first is what, when he is not disqualified for reappointment. Second, he has not given the company a notice in writing of his unwillingness, मतलब he is not willing to work to be reappointed. And third, a special resolution has not been passed at that meeting appointing some other auditor or expressly providing that he shall not be appointed. See, if the company, if the shareholders, they want to appoint someone else as an auditor, or they want to expressly say that इसको तो appoint नहीं करना है, तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से थोड़ी ना हो जाएगा. इट नीड्स अ स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड स्टूडेंट्स वी विल सी अ प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल विल आल्सो बी रिक्वायर्ड. सो वी विल सी इट व्हेन वी विल डू सेक्शन 140 सबसेक्शन 4. क्लियर. सो दिस वाज सेक्शन 139 सबसेक्शन 9. ठीक है. नाउ आई एक्चुअली नीडेड माय पीडीएफ नाउ. ठीक है. So what all sections we have covered for section 139, let us just have a look. ठीक है. So till now we have covered appointment of subsequent auditor by a company other than government company, section 139 subsection 1, whereby rule 3 will be covering abhi. Rule 4 we have seen, whereby 4 conditions are mentioned, and ATT 1 the auditor has to file. Then we have done appointment of subsequent auditor in case of a government company, that is subsection 5 of section 139. Appointment of first auditor by a company other than government company, subsection 6. Appointment of first auditor by a government company, which is subsection 7. Casual vacancy we have done. Section 139 subsection 9, it says that if these three conditions are satisfied, the retiring auditor can be reappointed. क्या क्या conditions थी, वो disqualified नहीं होना चाहिए, उसने खुद से लिख के नहीं देना होना चाहिए that I do not want to get reappointed, and company should not have passed a special resolution that providing expressly that someone else will be appointed or he shall not be appointed. ठीक है. So section 10 says that if no new auditor is appointed or reappointed, then the existing will continue. Clear? Now, subsection 11. Sarthak, your doubt will be clear here. It says that, I'll do one thing, I'll tell you the page number. So basically, when we will be doing audit committee, section 177, this point will come again. But in order to complete section 139, let me just tell you what subsection 11 says. It says that, see, हमने अभी तक क्या पढ़ा, that board of directors appoint करेगा auditor को. ठीक है. It says that where there is audit committee, we will be doing section 177, whereby we'll be seeing that with respect to what all companies, constitution of audit committee is mandatory. ठीक है. So जहां पर भी audit committee है ना, तो any vacancy, be it casual vacancy, any vacancy, जो board of directors को हम बार बार बोल रहे हैं ना कि board of directors 30 days का time है, उससे पहले the board of directors will take the recommendation from the audit committee. Audit committee recommend करेगा कि appoint ABC and associates. Then auditor will send that name to the members in AGM. ठीक है. And Sarthak, yes, casual vacancy may be audit committee will recommend to the board of directors. What will be that process? Rule 3 is there, which we'll be discussing just now. So this was section 139 subsection 11.
क्लियर है? क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज, क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज. See, Aditi, with respect to section 139 subsection 9, A, B, C, 3 points and there is an and in between these points, है ना? डिस्क्वालिफाइड भी नहीं होना चाहिए, ऑडिटर ने खुद से भी मना नहीं करना होना चाहिए, एंड कंपनी ने भी मना नहीं करना चाहिए. तीनों चीजें होंगी तब भी तो उसको रीअपॉइंट करोगे ना. इसमें से एक भी हो जाता है. ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड है, कंपनी ने मना नहीं किया, ऑडिटर ने मना नहीं किया, बट ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड, तो और नहीं है, देयर इज एंड. क्लियर? इज इट क्लियर? Is it clear? Quickly send in your replies. See, in the module now, on page number 10.15, Rahul, this is your query now. So other points, important provisions regarding appointment of auditors is there, 1 and 2 point. Ben Reddy, I am not able to do that. I have tried it. He is telling me कि PDF को कैसे close करना है, but वो close नहीं हो रहा. सिस्टम ही है. Oh. So is it clear? Send in your replies. So students, see ADT 3, I think now it is visible. ठीक है, देखो ADT 3 क्या था? So where were we? Section 140 subsection 2 में, है ना? Notice of resignation by the auditor. So this is just for your understanding. एक practical point of view देख लेते हैं. So notice of resignation by the auditor. Form number ADT 3 as per Rule 8 of Companies Auditor and Auditor Rules 2014. ठीक है, तो कहाँ पर देखो कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस, ईमेल आईडी, कैटेगरी, वेदर यू आर एन इंडिविजुअल और अ फर्म, इनकम टैक्स नंबर ऑफ ऑडिटर्स फर्म एंड ऑल दीज डिटेल्स. नाउ सी रीजंस फॉर रेजिग्नेशन, है ना? वेदर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज अटैच्ड, एनी अदर फैक्ट्स. तो आपकी बुक में भी तो यही लिखा है ना, stating the reasons and other facts, है ना? I hereby confirm that the information is complete and the auditor or the partner will be signing it. ठीक है? Clear? Are you able to see ADT 3? हाँ, ADT 3. ठीक है? So see, कहाँ पर थे हम? Section 140 subsection. See. It is mentioned here that form ADT 3 as per Rule 8, ठीक है, to the in case of government company CAG को भी जाएगा, कंपनी को भी जाएगा, रजिस्ट्रार को भी जाएगा. It shall indicate the reason and other facts. ठीक है, और देखो यहाँ पर भी तो यही है ना, reasons and other facts. Students, whatever you are studying ना, देखो we are studying Companies Act 2013. So practically you will find as it is the form, or when we will be doing let's say in chapter number 11 the audit report, whatever you will be studying, you will see practically it has an implication, है ना? practically भी वो वैसे ही होता है. ठीक है, ठीक है, is it clear? So reasons and other facts. So this was what ADT 3, whereby it is to be filed notice for resignation by the auditor. Clear? Is it clear? ठीक है, and ठीक है, and here just make it as 2 lakhs. ठीक है, so this is page number 10.15. ठीक है, so section 140 subsection 3 says that 50,000 or remuneration whichever is less and continuing default है तो penalty of 500 rupees per day after the first day and subject to a maximum of rupees 2 lakh as per section 140 subsection 3. ठीक है,
Clear hai? And this is what? Filling of casual vacancy, government company में 30 days are given to whom? The CAG, and next 30 days to BOD. In case of other companies, 30 days to the BOD, but in case of resignation, appointment by BOD should be approved by company. This is what? GM, general meeting. Okay? Within the next 3 months. Where is it mentioned 3 months, and the auditor, he shall hold office till the conclusion of the next AGM. Is it clear? So now, students, we are left with these 3 subsection of section 139, subsection 2, 3 and 4. Okay? So before starting with it, quickly tell me whether you are able to understand whatever we have done so far. Module se tab I was not able to show you all the module, the pages of module, but now I hope it is clear. And ADT 3 practical भी आपको पता चल गया कि कैसे होता है form. Quickly send in your replies. Should we proceed further with subsection 2, 3, 4? ठीक है. So now we'll start with the term of auditor, which is contained in subsection 2. अच्छा, and for all those who were saying कि ma'am section 139 ये रहा, so this is section 139 subsection 9. This is section 139 subsection 10. ठीक है. And section 139 subsection 11 जो अभी हम पढ़ेंगे वो कहाँ दिया गया है? Just so this is from section 139 subsection 11, that where a company is required to constitute audit committee under section 177, all appointments including filling of casual vacancy of an auditor under this section shall be made after taking into account the recommendations of such committee. Clear? Is it clear? So Didi is saying, ma'am, clear till now. Everything clear. Hitesh is saying, yes, ma'am, proceed further. Okay? You are unable to find Neha. This is section 139 subsection 11 on page number 10.22. Okay? And section 139 subsection 9 and 10 are on page number 10.15. These points. Neha, is it clear now? Okay? Now, section 139 subsection 2. So the topic is what? Rotation of auditors. Now, students, this is your test. Okay? You all have done chapter number 1. And there is a line related to rotation of auditors in chapter number 10. Chapter number 1. Quickly tell me with reference to which topic have you just came across these words, rotation of auditor, and it was specifically mentioned in chapter number 1 that rotation of auditors will be done in detail in chapter number 10. Quickly send in your reply. And Neha, tell me whether you are able to find that section 139 subsection 9 and 10. Quickly send in your reply, students. I'm waiting for it. Waiting for your replies. In chapter number 1. So you have done threat to independence of auditor. And one of the threat was familiarity threat. Okay. Pooja has correctly answered. Then Meghna has correctly answered. Sarthak, Shriram, Nilabjo, Karthik. Absolutely correct. Familiarity threat. So what was that? That the auditor becomes too much familiar. In case the auditor becomes too much familiar with the client organization, he may not be in a position to give an independent, unbiased opinion. Okay? It might be possible that there is a threat to auditors' independence. So what was the solution mentioned there? That one of the safeguard for the auditors for threat to auditors' independence, basically familiarity threat is what? Rotation of auditors. Okay? So what is it? First of all, the
provisions are contained in section 139 subsection 2 and it is not applicable for all the companies. It is applicable for certain class of companies as a prescribed, और जहां पर भी prescribed होता है तो वहां कहां जाना पड़ता है? We have to refer to the rules. ठीक है? So what are the classes of company to which rotation of auditors is applicable? So let us just have a look. So first of all the listed companies have to comply with section 139 subsection 2 except for OPC, one person company and small companies. In the last session we have seen what is meant by the OPC and what is meant by the small companies. ठीक है? So all listed companies except for excluding one person company and small company. ठीक है? Further, listed company को तो 139 subsection 2 comply करना है. Now with respect to unlisted public company and the private limited companies, there is a threshold limit which has been given which says that if the paid up share capital of all unlisted company, listed तो ऊपर cover हो गया है ना, if it is more than equal to 10 crores, then section 139 subsection 2 more than equal to 10 crores, then section 139 subsection 2 has to be complied with by that company. In case of private limited company having the paid up share capital of more than equal to 50 crores, again section 139 subsection 2 becomes applicable. Clear? So इतना समझ आते हैं. First is what? Listed company को तो करना ही है. किसको नहीं करना? one person company and small company को नहीं करना. All unlisted public company का having paid up share capital of more than equal to 10 crores and all private limited companies का क्या है? Paid up share capital is more than equal to what? Your 50 crores. ठीक है? Is it clear? Now the fifth point in this, it says that if these companies, they may have paid up share capital below the threshold, मतलब unlisted public company का less than 10 crores है, private limited company का less than 50 crores है, but if they have public borrowings from financial institution, banks or public deposits exceeding rupees 50 crores, though they may not meet any of these criteria, ठीक है, but if their public borrowing from financial institution, banks or public deposit exceed rupees 50 crores, then also this section will become what? This section will become applicable. Is it clear? Quickly send in your reply. अभी थोड़ा थोड़ा समझ आया? ठीक है? Now let us just have a look at one of the case studies that is given. Then it is going to be more clear to you. See. रानू प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो पेड अप शेयर कैपिटल का क्या लिमिट था? मोर देन इक्वल टू 50 crores, है ना? हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 42 crores, तो 42 crores है which is less than 50 crores, but having public borrowings from nationalized banks and financial institution of 72 crores, वहां पर भी तो 50 crores का था ना लिमिट, but it is more than equal to 50 crores, so manner of rotation of auditor will be applicable. Is it clear? बेशक ये वाला clause meet नहीं हुआ है, but since this clause is met, then section 139 subsection 2 becomes applicable. Same for the unlisted public company. Listed company को तो करना ही करना है irrespective of its threshold, and OPC and small companies को applicable नहीं होगा. Clear? Now what is meant by rotation of auditor? Be with me, you will be able to understand it. Applicability समझ आया हमें? आ गया. ठीक है? अब rotation of auditor क्या बोलता है? ये बोलता है कि क्योंकि familiarity threat हो जाता है ना, this is one of the threat to independence, तो उसका safeguard क्या है? Auditors को rotate कर दो. What is meant by rotation? It basically says कि अगर individual is appointed as an auditor of a company, तो उस केस में appoint him for a tenure of 5 consecutive years. If you remember, in section 139 subsection 1 में पढ़ा था ना, that subsequent auditor once appointed will hold office till the conclusion of the 6th AGM, and there I told you कि कितना साल हो गया? 5 years. तो section 139 subsection 2 बोलता है
कि उसको मैक्सिमम टाइम 5 कंसेक्यूटिव इज कंटिन्यूअस ईयर्स, वन आफ्टर द अदर 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर दो इफ द ऑडिटर इज एन इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है. इफ ऑडिट फर्म है ना, in that case the maximum time for which auditor can be appointed is 2 terms of 5 consecutive years. मतलब 2 into 5 कितना years हो गया? 10 years. पर appointment will not be made for 10 years. वहां पर तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में क्या बोला है कि पहले 5 साल के लिए अपॉइंट करो, फिर 5 साल के लिए अपॉइंट कर लो, है ना. बट मैक्सिमम कितना टर्म्स बोल सकते हो? 2 टर्म्स. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अगर एक साथ 10 ईयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? 1 टर्म ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स. ऐसा नहीं है ना, तो 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए आप ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर सकते हो. ठीक है. अब अभी रोटेशन नहीं आया है इसमें. अब रोटेशन कैसे आएगा? Then it says, let's first understand individual as auditor. उसको 5 years के लिए हमने अपॉइंट किया. नेक्स्ट 5 years के लिए उसको अपॉइंट मत करो. Give a cooling period. 5 सालों के लिए that auditor cannot be appointed. हाँ, after a break of 5 years, again that auditor can be appointed. अब देखो, अब आया ना रोटेशन. पहले मैक्सिमम 5 years के लिए अपॉइंट करो, उसके बाद एक कूलिंग पीरियड दे दो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, और वो कूलिंग पीरियड कितने ईयर्स का है? 5 years का. हाँ, उसके बाद ही कैन बी अपॉइंटेड. ठीक है. इन केस ऑफ द ऑडिट फर्म हमने क्या पढ़ा? 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, बट अगेन कूलिंग पीरियड है, और कूलिंग पीरियड कॉमन है कितना? 5 years. कूलिंग पीरियड यहाँ पर 10 years नहीं है, यहाँ पर भी क्या है? 5 years. ठीक है. सो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? रोटेशन करना है ऑडिटर का, जिससे कि फेमिलियरिटी थ्रेट ना हो. कैसे? If individual is appointed as an auditor, then 1 term of 5 consecutive years, then a break of 5 years, and then again appoint कर सकते हो. ठीक है. ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 terms of 5 consecutive year, then a break of 5 years, then a break of 10 years नहीं है यहाँ पर. ठीक है. Don't get confused. ठीक है. Clear? Is it clear? ठीक है. Is it clear? Now let me just ask you one question. So we are saying, let's say there is one audit firm, ठीक है, X, Y, Z and associates. ठीक है. And it has been appointed as an auditor of A Limited, our client, for 2 terms of 5 consecutive years. ठीक है. Now there is another firm X, M, N and associates. That is, कौन है यहाँ पर? कॉमन पार्टनर है X. ठीक है. कॉमन पार्टनर X है. Tell me whether X, this I have told you that X, Y, Z associate, now यहाँ पर 5 year का कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा इसको, because 10 years हो चुके हैं. ठीक है. Now my query to you, that whether X, M, N and associates can be appointed as an auditor of this company, yes or no? Just keep the familiarity threat वाला point in your mind. क्या logic है 139 subsection 2 का? Just keep that in your mind and answer to this question. What is my question? I'll repeat it. Whether X, M, N and associates, whereby X is a common partner in both the firms, whether that can be appointed as an auditor of A Limited. Quickly send in your reply. So Karthik, Charu, Siddharth, Pooja, absolutely correct. And Sarthik, you are also correct. No, why? Because common partner तो है ना, familiarity threat तो है ही ना, है ना. Why? Because X is having influence here, X is having influence here, है ना. So section 139 subsection 2 contains this clause also. See, where is it mentioned? As on the date of appointment, no audit firm having common partner or partners to other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the same company for a period of 5 years. ठीक है. So let us have a look at this example. XYZ and Company is an audit firm having partner Mrs. X
Mr. Y and Z whose tenure has expired in the company immediately preceding the financial year. मतलब ये audit firm है तो इसको कितने साल के लिए appoint किया होगा? 2 terms of 5 consecutive years के लिए. ठीक है? AB, Z and Associates. So who is the common partner here? Z. And another audit firm in which Z is a common partner will be disqualified for the same company along with XYZ and company for the period of 5 years. Is it clear? Is it clear? So almost all of you, Sudarshan, Hitesh, Gehani, Sahu, Siddharth, Meghna, Hitesh, all of you have answered correctly. ठीक है? Now, student, this clause, this point, subsection 2, see, basically, it deals, this point was relevant when there was a transition from Companies Act 1956 to Companies Act 2013. है ना? उस टाइम पे क्या था? Because this requirement of 2 terms of 5 consecutive years or 5 years, this was not in the earlier Companies Act. So as such, it is not of much relevance now. So you can do one thing from page number 10.18 till these examples. It is going to be very clear to you. आप इसको you just go through it till here. This is your homework. Just go through these pages. In case you have any doubt, I'll definitely take your doubts. ठीक है? तो section 139 subsection 2 में हमने क्या बोला कि अगर किसी individual को the company has to appoint as an auditor, so it can be appointed for not more than 1 term of 5 consecutive years, and अगर कोई audit firm है, so for 2 terms of 5 consecutive years, provided that an individual auditor who has completed his term in clause A individual shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years for completion of term, and in case of audit firm for 5 years, इसका भी 5 years है. ठीक है? और ये किस किस पे एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी, लेकिन ओपीसी और स्मॉल कंपनीज को हम परेशान नहीं कर रहे हैं कि आप रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स करो. ठीक है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन इक्वल टू 10 crores, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन इक्वल टू 50 crores. All companies, even if they do not meet the threshold limit with respect to paid up share capital, if their public borrowings from financial institution, banks or public deposits is more than equal to 50 crores, section 139 subsection 2 is applicable. Common partner hai, to they are also disqualified. ठीक है? If or in other language I can say, if the outgoing firm and the incoming firm, they are related, they are under the same trade name, है ना? Then the incoming firm will be disqualified. वो भी 5 years के लिए disqualified है. कहाँ लिखा है इसमें? You will be able to find. We have done this point, and from point number 2 till page number here, I've given you to read it as a homework. I told you that it basically relates to the transition period, है ना? जब Companies Act 2013 में हमने shift किया था, तो it was basically the crux is of these 4 pages is that कि अभी this clause was introduced in Companies Act 2013. So basically there was a clause that we understand that for a company to follow this rule कि 5 years तक ही appoint करना individual को या 2 terms of 5 consecutive years के लिए appoint करना, so it is not easy for a company to follow this. So a period of 3 years was given, that after the commencement of the act 3 years का टाइम है, 3 years तक आप इस कंडीशन को फॉलो कर लो, इस सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 को कंप्लाई कर लो. When you will just go through these examples, 2 examples are given, it is going to be very clear to you. ठीक है? Now students, see, the provisions relating to disqualification and rotation of auditors are meant to ensure that audit function remains unbiased. These legal provisions also provide enough safeguards so that auditors can form their opinion in an independent and highly professional manner without any bias. Is it clear? Is it clear? Any doubt to anyone? ठीक है? And there are 2 points
Let me just take you through those. Just a minute. So this, it has been provided that right of the company to remove an auditor or right of auditor to resign from such office of the company shall not be prejudiced. So what is meant by this? See, section 139 subsection 2 क्या बोलता है? Individual को 5 years के लिए appoint करो for one term of 5 consecutive years and audit firm को 2 terms of 5 consecutive years के लिए appoint करो. This point says, and this is basically what provision to subsection 2. Subsection 2. So ये क्या बोलता है? That the auditor's right to resign. Auditor तो term से पहले resign करेगा ना? And the company's right to remove the auditor. ये all these both the things, that is right to resign, right of what auditor to resign and right of company to remove the auditor, वो कहाँ contained है? Section 140 में, जो अब हम करेंगे. So these sections will not be prejudiced. मतलब अगर हमने, if this section has said that for 5 years or for 2 terms of 5 years the firm will be appointed, it does not mean that the auditor cannot resign before that completion of term. It does not mean that the company cannot remove. वो वाले rights तो हैं ही, right? So section 139 subsection 2 will not override section 140. Clear? Auditor को resign करना है तो वो कर सकता है. ऐसा नहीं है कि 139 में subsection 2 में he has been appointed for 5 years तो he cannot resign. Nahi, the right that has been given and the responsibilities that have been given by section 140, that can be, that stay as it is. Okay? Same way the company can also remove the auditor. Okay? So this is what provision to subsection 2. Then this point number 4 is section 139 subsection 3. It says that the members of the company may resolve that the audit firm appointed by it, the auditing partner and his team shall be rotated at such interval as may be resolved by the members. What is meant by that? Section 139 subsection 2 क्या बोलता है कि अगर आपको audit firm को appoint करना है 2 terms of 5 consecutive years के लिए कर सकते हो. इतना ही बोलता है section 139 subsection 2. Subsection 3 क्या बोलता है? That when you have appointed an audit firm for total is what, 10 years, then the members में pass a resolution कि ये जो 10 years है ना, इसके अंदर भी first 5 years के लिए ये वाला partner आएगा. For example, ABC and Associates is appointed as an auditor. So the members may resolve that first 3 years के लिए Mr. A, CAA, who is the partner in the firm, and his team will work. For the next 3 years, or next 2 years, Mr. B, who is another partner in this firm, and his team will work. Simple है ना? है ना? So basically the members are becoming what? Extra cautious. Section 139 subsection 2 ने तो बोला ही है कि आप 10 years, maximum 10 years, that is 2 term of 5 consecutive के लिए you can appoint an audit firm. But members may resolve कि ठीक है, अगर audit firm है उसमें भी internal rotation they can do of the partners. ठीक है? And members may resolve that the audit shall be conducted by more than one auditor, that is joint auditors can be appointed, which will be doing in SA 299. So this is what section 139 subsection 3 and section 139 subsection 4 says as to what is the manner of rotation of auditors. Simple. What is the manner of rotation of auditors? There are 2 points. So it is mentioned that it is as may be prescribed, and where is it mentioned? In rule 6, okay, of the company's auditor and auditor rules 2014. So this is very simple. Why? Because now you all have done section 139 subsection 11 कि जहां पर भी audit committee है, audit committee will give its recommendation. ठीक है? So देखो rotation of auditor का क्या मतलब है? अब audit committee कहाँ recommendation देगा? 5 years हो गए individual auditor को. Now 5 years का cooling period है and new auditor will come. So now who can be the new auditor? The audit committee will give the recommendation. So it is mentioned that audit committee shall recommend to the board the name of the individual auditor or the audit firm who may replace the incumbent. Incumbent is what? Existing auditor
on expiry of term of such incumbent. Incumbent is existing office who is holding the existing office. कि जब उसके 5 साल या 2 terms of 5 consecutive years complete हो जाएंगे, so the audit committee may give the recommendation. Where a company is required to constitute audit committee, the board shall consider the recommendation of such committee, and in other case, the board shall itself consider the matter of rotation and make its recommendation for appointment of next auditor to the members in the AGM. ठीक है? So इतना समझ आता है ना, जहां बोर्ड है वहां बोर्ड रिकमेंड करेगा, जहां ऑडिट कमेटी है ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन बोर्ड को मिलेगा, बोर्ड उसको एजीएम में मेंबर्स को प्रेजेंट करेगा. सो दिस इज रूल 6 with respect to rotation of auditor. What is the entire process कि ये सब कैसे होता है, रूल 3 में we will be doing after the break. ठीक है, तो इतना क्लियर है. ठीक है, so let me just now revise the entire section 139 subsection 2. देखो अब हमने ये वाला जो जस्ट अ मिनट, हाँ. So term of auditor section 139 subsection 2 we have done, जहां पर we saw that what all companies are there to whom section 139 subsection 2 applies. Then we saw that it says कि 5 individual है तो 5 consecutive years के लिए appoint होगा maximum time period, and if it is an audit firm 2 terms of 5 consecutive year, then cooling period of 5 years होगा. We also saw that common partner है तो he cannot be appointed. ठीक है, 139 subsection 3 में हमने क्या देखा, and subsection 4. So 139 subsection 3 में हमने देखा that the members may resolve कि internal rotation within the audit firm हो रहा है engagement partners का. ठीक है, and second point they may resolve that joint auditor will be appointed, that more than one auditor. ऐसे 299 हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, section 139 subsection 4 क्या बोलता है कि there is a manner for rotation of auditor in the rules. तो वो कौन सा रूल है, रूल नंबर 6, जो कि क्या बात बोलता है कि ऑडिट कमिटी अपना रिकमेंडेशन देगा, जहां ऑडिट कमिटी नहीं है वहां बोर्ड अपना रिकमेंडेशन दे देगा. किसको, मेंबर्स को. जहां ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी किसको रिकमेंडेशन देता है, बोर्ड को. देन बोर्ड गिव्स द नेम टू द मेंबर्स in the AGM. Clear? Is it clear? So now we will quickly revise section 139 in entirety. It will take another 10 minutes. After 10 minutes, we will take a break. Uske baad we'll start with section 1. We will do rule 3 and section 140. So let me just have a look at the query so that while revising, I can take your query side by side. With respect to transition period now, Smita, you can go through the module. As such, it is not much relevance. You can go through it in the at your home. In case of any doubt, I'll take it up in the next session. See, Nilabju, ऐसे तो आप every year you can change the auditor ना. This is the provisions that has been provided by the Companies Act, है ना. Changing the auditor every year he will the new auditor will understand your work. Every auditor you need to every year you will be providing the auditor with the memorandum of association, article of association. हर बारी आप ये सब करोगे तो in case of big firms, big companies audit, it is time consuming ना. So that is why this provision is there कि 5 years तक के लिए it is okay, 10 years के लिए it is okay. ठीक है नीलाब्जू. So individual can be appointed only for a period of 5 years. उसके बाद 5 year का cooling period देना ही पड़ेगा. Someone else is to be appointed. ठीक है, सेम वे ऑडिट फर्म है तो 2 terms of 5 consecutive year, उसके बाद 5 years का कूलिंग पीरियड देना ही पड़ेगा. सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, and it is not applicable for all the companies, है ना. So it is applicable for the companies which are given in the rule which we have discussed. ठीक है, तो चारू, नीलाब्जू, is it clear? Smita, I told you 3 years wala point. You just go through the module at home and then ask me this doubt in the next session. Charu, no. So Charu is saying, see, let me just take that. Charu has asked a good question. Just a minute. Let me just take you through that point.
सी एक तो ना ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ो. जॉली लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, अपॉइंटेड Mrs. Polly and Company, a chartered accountant firm, as statutory auditor in its AGM for 11 years. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 11 years के लिए अपॉइंट हो सकता है? नहीं. हमने क्या पढ़ा था? होल्ड द ऑफिस फ्रॉम दैट AGM till the conclusion of नेक्स्ट 6th AGM. तो मैक्सिमम 5 years के लिए हो सकता है. तो 2 terms of 5 consecutive years के लिए क्या है कि अभी अपॉइंट किया 5 years के लिए, फिर अगेन रीअपॉइंट कर दिया 5 years के लिए. So further a cooling period of 5 years for completion of term is required. That is, the firm can't be reappointed for further 5 years after completion of 2 years of 5 consecutive years. So see, the appointment of Messrs. Polly and Company is not valid, as the appointment can be made only for one term of 5 consecutive years. इकट्ठे 10 years के लिए appoint नहीं करना है. And then another one term of 5 consecutive years. It can't be appointed for 2 terms in one AGM only, because the rule is what? The thumb rule is what? That the auditor so appointed in an AGM shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of 6th AGM. तो 5 सालों के लिए ही अपॉइंट होगा. हाँ, अगर 2 terms of 5 consecutive years के लिए करना है तो पहले 5 years के लिए कर दो, फिर 6th AGM में दोबारा से कर दो. देखो, let me just take you through section 139 subsection 1. I have told you at that time that I'll be referring to this point again. देखो, now read it. Just a minute. See, read these lines. Auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of 6th AGM, मतलब 5 सालों के लिए अपॉइंट किया, and thereafter till conclusion of every 6th AGM, 6th meeting, मतलब फर्स्ट ईयर की AGM में किया, आफ्टर द फर्स्ट ऑडिटर 6th AGM तक ही हेल्ड द ऑफिस, दैट इज फॉर 5 years. फिर वहां पर आपने रीअपॉइंट किया another 5 years के लिए. क्लियर? इज इट क्लियर? Is it clear? And so whatever homework I have given you ना, मैंने उसमें से maximum आपको बता दिया है. We have gone through the important points. One more point is there. Just a minute. ठीक है. Now this point. It was someone's doubt. If a partner who is in charge of an audit firm and also certifies the financial statement of that company retires from the said firm and joins another firm, तो ABC and associate was the auditor of the company. ठीक है. ABC में से A retire हो जाता है and he joins AYZ and associates. Now AYZ and associates is also not qualified अगर वो 10 years का time period is over. Why? Because he is having influence, है ना? Such other firm shall be ineligible for appointment for a period of 5 years. ठीक है? So whose doubt was it? I think Charu, it was your doubt. ठीक है? Now I'll do one thing. I'll revise this entire section. ठीक है? I've taken maximum of your doubts. So let us go through this summary. Section 139, and I told you there are 11 subsections. Okay? So the name of the section is what? Appointment of auditor. Section 139 deal किससे करता है? Appointment of auditor. ठीक है? There are 11 subsections. So first of all, we will see with respect to Section 139 subsection 6, 7, 1 and 5. ठीक है? So with respect to first auditors, in case of a government company, CAG को appoint करना है 60 days में. Now no more queries. Just concentrate on the revision. Maximum of your queries will be solved when you will concentrate on this revision of next 7-8 minutes. ठीक है? It is going to be very helpful. ठीक है students? So now stop sending the queries. Break में you can send your queries. So first auditor को गवर्नमेंट कंपनी में सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 में कौन अपॉइंट करता है? CAG. 60 days are given from the date of registration. If he is unable, next 30 days to BOD. If he is unable, then 60 days to the members in the EGM. ठीक है? The auditor so appointed will hold office till the conclusion of first AGM.
अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 days एंड देन 90 days टू द मेंबर्स एंड होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM. We have done section 139 subsection 6 and 7. Subsequent auditor को गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा? CAG 180 days from the commencement of year, और वो ऑडिटर every year like till the conclusion of AGM he shall hold the office. ठीक है. Other than government company, section 139 subsection 1 में members will appoint at the AGM and such auditor will hold office from that AGM, considering it as the first AGM till 6th AGM, subject to fulfillment of certain conditions. क्या conditions हैं? First is what? Written consent is to be taken from the auditor कि भाई writing में दे दो that you have agreed to be appointed. Plus एक certificate ले लो with respect to fulfillment of conditions as may be prescribed. कहाँ prescribe की है? Rule 4 of the Companies Audit and Auditor Rule 2014. क्या conditions है? Eligible है, disqualified नहीं है auditor. जो appointment है as per term है, जो appointment है as per limits है, and जो भी list of proceedings है pending with respect to auditor, the firm or the audit partner is true and correct. I told you don't use the word fair here because कोई opinion नहीं दे रहे हैं, facts बता रहे हैं. ठीक है. Further it says the company needs to inform the auditor that you have been appointed. तो auditor को inform करना है. Plus company को किसको inform करना है? ROC को within 15 days. कैसे inform करना है? By filing ADT 1. Clear? So this was with respect to section 139 subsection 1. ठीक है. So these are clear. Section 139 subsection 8. It deals with what? Filling of casual vacancy. Casual vacancy होती है तो गवर्नमेंट कंपनी में कौन करता है? CAG को 30 days दिया हुआ, ये नहीं कर सकता तो BOD को next 30 days दिया हुआ. अदर कंपनीज में कैसे है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 days दिया गया है एंड द ऑडिटर सो अपॉइंटेड ही शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM. बट यहाँ पर एक रेजिग्नेशन वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि अगर रेजिग्नेशन होता है उस वजह से कैजुअल वैकेंसी आती है, then such recommendation by the board it shall be approved by the members, the shareholders in a meeting within 3 months from the board's recommendation. Clear? Logic मैंने आपको बता दिया. रेजिग्नेशन से रिलेटेड सेक्शन 140 के हमने 2 सबसेक्शन और पढ़े, सबसेक्शन 2 and 3. वो क्या कहते हैं कि ऑडिटर के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हेन ही इज रिजाइनिंग. द ऑडिटर नीड्स टू फाइल विद इन 30 days ऑफ रेजिग्नेशन ADT 3 किसके साथ? ROC और कंपनी के साथ, और गवर्नमेंट कंपनी में ROC, कंपनी एंड CAG के साथ. वाई? बिकॉज ही नीड्स टू स्टेट द रीजंस एंड अदर फैक्ट्स. नहीं करेगा तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 में क्या है? पेनल्टी प्रोविजंस है कि 50,000 और रेम्यूनरेशन विच इज लेस, और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो 500 per day फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹2 lakhs. क्लियर? सेक्शन 139 सबसेक्शन 8. ठीक है. सेक्शन 139 सबसेक्शन 10 क्या बोलता है? पहले हम 10 देखते हैं. कहता है कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू अगर आपने किसी को अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं किया. ठीक है. रिटायरिंग ऑडिटर को आप प्री अपॉइंट कर सकते हो. देखो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड. 5 years का टर्म हो गया ऑडिट फर्म का, अब उसको रीअपॉइंट करना है यहाँ पर, तो क्या आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है? नहीं ना, है ना. सो 2 terms of 5 consecutive years करना है तो उसको 5 years के लिए किया, अब रीअपॉइंट कर रहे हो तो he can be reappointed only if he is not disqualified, only if he has not given the company notice in writing of his unwillingness to be appointed and a special resolution has not been passed by the company कि किसी और को अपॉइंट करते हैं या इसको अपॉइंट नहीं करते हैं. डिटेल में अभी हम करेंगे आफ्टर द ब्रेक सेक्शन 140 सबसेक्शन 4. पर अब ये पॉइंट समझ आया जिसको भी डाउट था, है ना. एंड दिस इज कनेक्टेड बाय एंड, और थोड़ी ना होगा. ठीक है ना, कि डिस्क्वालिफाइड तो है पर ऑडिटर ने भी मना नहीं किया और इन्होंने भी मना नहीं किया कंपनी ने, तो अपॉइंट कर दोगे? नहीं, डिस्क्वालिफाइड है ना, तो एंड. ठीक है. सबसेक्शन 11 क्या बोलता है कि अगर ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी का रिकमेंडेशन कंसीडर करना है. ठीक है. सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सुनो, कंपनीज जो अगर आप लिस्टेड हो लेकिन ओपीसी और स्मॉल को नहीं बोल रहे, या आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, आपका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 crores है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 crores है, या चलो ये सब नहीं है,
बट आपका पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स मोर देन इक्वल टू 50 crores है, तो 139(2) को अप्लाई कर लेना। क्या अप्लाई कर लेना मतलब, अगर आप ऑडिटर को एज एन इंडिविजुअल को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो मैक्सिमम 5 years के लिए अपॉइंट कर दो, फिर 5 years का कूलिंग पीरियड दे दो। अब स्टूडेंट्स वर आस्किंग मैम उस टाइम पे ऑडिटर क्या करेगा, कहीं और ऑडिट कर लेगा ना। आपने देखा है ना कि मैक्सिमम 20 कर सकते हो, यहाँ पे आप चले गए हो कहीं और चले जाओ, यहाँ पर आपका कूलिंग पीरियड है तो। और ऑडिट फॉर्म एज ऑडिटर अपॉइंट करते हो तो 2 terms of 5 consecutive years, देन कूलिंग पीरियड ऑफ अगेन 5 years। कॉमन पार्टनर है किसी फॉर्म में तो अगर एक फॉर्म का कूलिंग पीरियड चल रहा है तो दूसरे का भी कूलिंग पीरियड चलेगा, बिकॉज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। या एनी ऑडिट फॉर्म विच हैज डन द ऑडिट और टर्म कंप्लीट हो चुका है 10 years का, दैट इज टू term of 5 consecutive years, and one of the partners from that firm he has resigned and joined another firm, तो another firm भी not eligible हो जाएगा। लॉजिक है ना, significant influence, familiarity, threat, all that। 139 subsection 139 subsection 3 क्या बोलता है, तो यहाँ मैंने लिखा है, नहीं लिखा, बुक से देखते हैं। 139 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, रोटेशन 139 सबसेक्शन 2 में है, बट इफ द मेंबर्स वांट दे कैन रिजॉल्व कि ऑडिट फर्म में भी इंटरनल रोटेशन कर दे एंगेजमेंट पार्टनर का, या मोर देन वन ऑडिटर को अपॉइंट करें। एंड सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर रूल 6 के अकॉर्डिंग हुई थी। रूल 6 क्या बोलता है कि ऑडिट कमिटी है तो उसका रिकमेंडेशन कंसीडर करो। So this was our section 139, all the subsections, only rule 3 is left। ठीक है, ये rule 3 रहता है which I'll be covering after the break। ठीक है, अब now send in your queries। अब रुको, ब्रेक के लिए टाइम है। send in your queries कि क्लियर है, all the subsection linkages बना पा रहे हो, समझ आ रहा है रूल 4 कहाँ आएगा एंड ADT 1 कहाँ आएगा या ADT 3 कहाँ आएगा। Now I'll do one thing, I'll try to show you ADT 1। I hope it will not get hanged again। Oh God, again। चलो ठीक है, so I hope it is clear। Quickly send in your replies। तो अभी तक सिद्धार्थ का ही रिप्लाई आया है। स्टूडेंट्स देखो, जो आपकी क्वेरीज आ रहे हैं ना, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 अगर बोल रहा है कि आपको 5 years तक ही अपॉइंट कर सकता है ऑडिटर, और इंडिविजुअल को यू कैन अपॉइंट, द कंपनी कैन अपॉइंट एन इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर ओनली फॉर 5 years। अब ऐसे मत बोलो कि अगर कोई और अपॉइंट नहीं होगा तो वो कंटिन्यू करेगा, वो नहीं कर सकता कंटिन्यू, बिकॉज मैक्सिमम पीरियड इज 5 years। उसके बाद 5 years का कूलिंग पीरियड है, दैट ऑडिटर कैन नॉट कंटिन्यू एज एन ऑडिटर। वो तो 5 years के लिए ही इंडिविजुअल अपॉइंट हो सकता है, एंड फॉर्म कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 terms of 5 consecutive year। उसके बाद 5 years का कूलिंग पीरियड देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, see, resignation of auditor, Aditi, it means that the auditor is saying कि now I'll not work before the expiry of the term, completion of the term। जो सपोज इंडिविजुअल ऑडिटर का एग्जांपल लेते हैं तो 1 term of 5 कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव ईयर्स था, तो लेट्स से 3rd year में ऑडिटर गिव्स हिज रेजिग्नेशन कि भाई मैं नहीं काम कर सकता आपकी कंपनी में, सो रेजिग्नेशन। ठीक है, और एक एग्जांपल में आपका रिटायरमेंट वर्ड यूज हुआ है, वो दैट हैज बीन यूज कि ऑडिटर इज रिटायरिंग फ्रॉम हिज ऑडिट फॉर्म। दिस रिटायरमेंट वर्ड हैज बीन यूज इन योर मॉड्यूल इन अ केस स्टडी, जहां पर इट इज मेंशन्ड दैट ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम हिज ऑडिट फॉर्म, तो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ठीक है, सो इज इट क्लियर। 139 subsection 3। So who is asking this? Krishnan। 139 subsection 3 is on page number 10.18 and 139 subsection 4 is on page number 10.19। ठीक है, so same auditor can be appointed for साहू, फॉर इंडिविजुअल है तो 5 years के लिए, 5 consecutive years के लिए, एंड अगर ऑडिट फॉर्म है तो 2 terms of 5 consecutive years के लिए। जॉइंट ऑडिट अभी जब हम करेंगे देन आई विल टेक यू थ्रू दैट। हुज डाउट वाज इट?
Bindu. So Shreya, I'll not repeat your doubt because it may create a confusion, but it will be 1 plus 5. ठीक है? So quickly send in your replies whether you have understood section 141 जो हमने last class में complete किया था, consisting of 4 subsections, and section 139 consisting of 11 subsections. As such you need not learn कि ये sequence ऐसे as such learn नहीं करना है. You just need to learn the name of the section 139, which is related to appointment of auditor. ठीक है? And I have made this summary in order to make it in order to help you to understand it easily. ठीक है? To understand the sequence of the all the subsections. ठीक है? So whatever subsections are mentioned in your module, try to learn them. ठीक है? So with this, I'll do one thing. I'll take a break of 10 minutes here. But before taking the break, I just want to request you all to please send your queries and also send your replies whether 141 and section 139 is clear or not. Okay? So we will take a break of 10 minutes here.
So students, I hope you all are back after the break. Quickly send in your replies. So I'll do one thing. I'll take 4-5 queries. Then we will start with rule 3. So see, retiring auditor means Aditi, the tenure has completed. अगर individual है तो 5 years complete हो गए. Now he is retiring from that firm as an auditor, है ना? और resignation क्या है? Before the completion of the term आप बोल रहे हो कि मेरे को 3 years में ही काम नहीं करना है. ठीक है? Clear अदिति? ठीक है? And see student, section 139 subsection 2. This is related to your query, Sudhanshu. So section 139 subsection 2 is required with respect to listed companies other than one person small companies, with respect to unlisted public company having paid up share capital of more than 10 crores, private limited companies having paid up share capital of more than 50 crores, Hana? And companies not meeting these criteria, but the companies which have public borrowings, deposits and everything more than equal to 50 crores. ये समझ आता है, वहां पर रोटेशन एप्लीकेबल है. अब सेक्शन 139 सबसेक्शन 10 जो है, सुधांशु, दिस इज योर क्वेरी. इट section 139 subsection 2 is applicable to these companies. What about the other companies? वहां पे section 139 subsection 10 will apply. ठीक है? Is it clear, Sudhanshu? Is it clear, Sudhanshu? And Aditi, you also tell me. Yes, Sahu, after 2 terms of 5 consecutive year, 5 years का cooling period आएगा. उसके बाद again that audit firm can be appointed for 2 terms of 5 consecutive years. ऐसे ही individual के केस में 5 years, then cooling period of 5 years, then again that individual auditor can be appointed as an auditor. So, Sudhanshu, you tell me whether your doubt is clear. Aditi, you also tell me. And Shreya, you are correct in whatever you have written. ठीक है? Band ready. Oh, your answers are reaching me. If there is any query, you may send that also. So, Karthik is saying all sections are clear and learned also. That is good. So, Hitesh, tell me specifically the line that you have mentioned. Where is it mentioned? Sahu, you also tell me whether your doubt is clear कि 10 years के लिए अपॉइंट हुआ, 2 terms of 5 consecutive year, 5 years का कूलिंग पीरियड आया, फिर दोबारा से अपॉइंट किया. तो is it clear? So quickly send in your replies, students, whether your queries are clear or not. ठीक है? ठीक है? Now we will look at rule number 3. So what is the manner and procedure of selection? Just so rule number 3, manner and procedure for selection and this is what appointment of auditor. ठीक है? Now just try to understand. Yes, page number 10.19. ठीक है? So देखो बहुत लॉजिकल है. Listen to this as a story. This entire rule 3 will be on your tips. ठीक है? तो देखो सेक्शन 139 सबसेक्शन 11 पे आपने क्या देखा, दैट वेयरएवर देयर इज ऑडिट कमिटी अपना रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल इन टर्न गिव दैट रिकमेंडेशन टू द मेंबर्स. जहां ऑडिट कमिटी नहीं है वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रिकमेंडेशन मेंबर्स को देगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. ऑडिट कमिटी कहाँ है कहाँ नहीं है ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, सेक्शन 177 में.
ठीक है, तो अभी ये वाला डाउट मत भेजना, सेक्शन 177 में विल बी डूइंग इट, ठीक है, बहुत सिंपल है। यू आर द कंपनी इज गोइंग टू अपॉइंट अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर इंडिविजुअल है देन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, अगर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 अप्लाई होता है, और अगर इंडिविजुअल नहीं ऑडिट फॉर्म है देन फॉर 2 terms of 5 consecutive years, ठीक है। नाउ हाउ टू अपॉइंट, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देयर इज ऑडिट कमिटी देन ऑडिट कमिटी विल मेक द रिकमेंडेशन, इफ देयर इज नो ऑडिट कमिटी देन बोर्ड, बट रिकमेंडेशन देने से पहले दैट दिस ऑडिट फर्म इज टू बी अपॉइंटेड, लेट्स से ABC and Associates is to be appointed as the auditor of X Limited. Whether it is audit committee which is making the recommendation or the board, अगर ABC and Associates का नेम देना है मेंबर्स को कि मेंबर्स इसको अपॉइंट कर लेते हैं एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो पहले either the audit committee or the board, as the case may be, they will see now what is the qualification, what is the experience, whether the experience is commensurate, adequate with the size and requirements of the firm. अब रिलायंस का ऑडिट करना है तो उसके लिए एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म को थोड़ी ना अपॉइंट कर दोगे एज एन ऑडिटर, है ना। एंड अगर ऑडिट फर्म भी है तो यू विल सी ना उनके पास जो टीम है, ठीक है, वेदर इट इज कमेंसुरेट, कमेंसुरेट इज व्हाट, एडिक्वेट, ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, उनको उन टूल्स पे जो भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं इन द कंपनी, वेदर दे आर अवेयर, वेदर दे हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ अ टेलीकॉम कंपनी, है ना, जो भी आपका क्लाइंट है। सो ऑडिट कमिटी और बोर्ड, जहां पर ऑडिट कमिटी रिकमेंडेशन देता है बोर्ड को, जहां बोर्ड है बोर्ड अपना रिकमेंडेशन देता है, बट उससे पहले क्या करना है, दे विल कंसीडर द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिट फर्म, वेदर इट इज कमेंसरेट, एडिकेट विद द साइज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ रिलायंस में प्रोप्राइटरशिप फर्म से थोड़ी ना ऑडिट करवा लोगे, एक टीम चाहिए होगी ना, है ना। देन whoever is making the recommendation, they will consider whether any order or pending proceeding is there with respect to professional matter before ICAI or competent authority or court. ऐसा तो नहीं है that कोई order या pending proceeding is there against the auditor, audit firm or any of the partner, ICAI के against competent in front of ICAI, before ICAI or competent authority or court. देखोगे ना किसी को भी अपॉइंट करने से पहले, एंड इधर द ऑडिट कमिटी और द बोर्ड मे कॉल फॉर सच अदर इंफॉर्मेशन एज इट मे डीम फिट, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था रूल 3 का, क्या है, कंसीडर करना है क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस कमेंसरेट है नहीं साइज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी से, कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग ऑर्डर तो नहीं है विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर बिफोर ICAI, कंपीटेंट अथॉरिटी और कोर्ट, एंड दे मे कॉल फॉर सच इंफॉर्मेशन एज दे डीम फिट। कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। देखो आप उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हो, इधर द इंडिविजुअल और द ऑडिट फर्म को, सो हुएवर इज गोइंग टू मेक द रिकमेंडेशन पहले पता होना चाहिए ना, तभी तो बोलोगे ना इससे काम करवा लेते हैं। क्लियर? नाउ इफ देयर इज ऑडिट कमिटी विल रिकमेंड द नेम टू द बोर्ड, इफ देयर इज नो ऑडिट कमिटी बोर्ड शैल रिकमेंड इट्स नेम। किसको रिकमेंड करना है? बोर्ड शैल रिकमेंड इट्स नेम टू द मेंबर्स, ठीक है। नाउ इफ देयर इज ऑडिट कमिटी और ऑडिट कमिटी ने बोला लेट्स से कि ABC एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट कर लेते हैं एज एन ऑडिटर, एंड बोर्ड अग्रीज कि ठीक है ABC एंड एसोसिएट्स हमें भी ठीक लग रहा है, इन्हीं को अपॉइंट कर लेते हैं एज एन ऑडिटर, द बोर्ड शैल फर्दर रिकमेंड द नेम टू द मेंबर्स कि मेंबर्स हमने ये वाला ऑडिटर सिलेक्ट किया है, दिस इज आवर रिकमेंडेशन, प्लीज इसको AGM में अपॉइंट कर दो। क्लियर? ऑडिट कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया कि ABC एंड एसोसिएट्स को करते हैं, बोर्ड ऑल्सो अग्री, ठीक है ABC एंड एसोसिएट्स को करते हैं, उनका नेम फर्दर एनुअल जनरल मीटिंग में लेट डाउन हो जाएगा कि इनको आप अपॉइंट कर दो एज एन ऑडिटर। क्लियर? नाउ जब ऑडिट कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया और बोर्ड कहता है कि नहीं ABC एंड एसोसिएट्स को नहीं करना, XYZ एंड एसोसिएट्स को कर लेते हैं, ठीक है, तो बोर्ड इज डिसएग्रीइंग विद द ऑडिट कमिटी। अब क्या करना है? Board will refer back the recommendation to audit committee
फॉर रिकंसिडरेशन कि ऑडिट कमिटी देखो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, वी आर नॉट फाइंडिंग इट करेक्ट कि एबीसी एंड एसोसिएट्स को कर लो, तो प्लीज रिकंसीडर करो. प्लस बोर्ड विल मेंशन द रीजंस that this is the reason why we are not finding ABC and associate fit for the audit of our company. ठीक है, तो जहां बोर्ड ने डिसएग्री किया, रेफर बैक रिकमेंडेशन टू ऑडिट कमिटी फॉर रिकंसिडरेशन की रिकंसिडर करो, है ना, साइटिंग द रीजंस. समझ आता है? ठीक. नाउ आफ्टर कंसिडरिंग द रीजंस ऑफ बोर्ड, if audit committee decides not to reconsider its original recommendation कि भाई हमें तो audit committee कहता है नहीं, ABC and associates ही ठीक है, your reasons are not valid. ठीक है, ऑडिट कमिटी क्या बोलता है, एबीसी एंड एसोसिएट्स को ही करेंगे, XYZ को नहीं करना है, योर रीजंस आर नॉट वैलिड. नाउ व्हाट विल बोर्ड डू, बोर्ड शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट कि क्या है, what are the reasons of the board, board क्यों बोल रहा है कि XYZ को करो, ABC को नहीं करना है, and what is audit committee saying, and finally board will send its own recommendation, board अपना recommendation भेज देगा किसको, members को. clear? एंड सेकेंड, अगर बोर्ड अग्री कर जाता है, ऑडिट कमिटी ने क्या बोला कि भाई हमें तो एबीसी एंड एसोसिएट्स ही अपॉइंट करना है, बोर्ड कहता है ठीक है, ओके फाइन, अग्री कर जाता है, तो board will send the name of ABC and associates for the member in the AGM, and the auditor so appointed, he shall hold office from that meeting, conclusion of that meeting till the conclusion of the 6th AGM. तो यहाँ पे I'll repeat it that an audit firm can be appointed as an auditor for one term of 5 consecutive years. फिर उसको reappoint कर सकते हो for another term of 5 consecutive years. एक साथ 10 years के लिए appoint नहीं कर सकते. There is no such provision. ठीक है, because 139 subsection 1 बोलता है ना कि first meeting consider करेंगे जहां appoint हुआ, and then 6th AGM तक the audit firm can or the auditor so appointed can hold the office. क्लियर है? कोई डाउट है? बहुत सिंपल है, एक बार दोबारा देखते हैं. एंड स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आई डू वन थिंग ऑन दी BOS नॉलेज पोर्टल, लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू दैट, है ना. BOS नॉलेज पोर्टल पे ना देर इज समरी शीट्स बाय द नेम सब्जेक्ट वाइज कैप्सूल्स, है ना. तो दिस there are number of chapters and chapter number 10 has beautiful summaries. आपको पूरा chapter summarize हो जाता है, बहुत अच्छे से दिया हुआ ये. I have told you कि BOS knowledge portal में, है ना, you need to go और वहां पर subject wise capsules में auditing and assurance पे अगर जाते हो तो let us revise this rule 3 from this capsule. So see rule 3. I hope the screen is visible to all of you. Quickly send in your replies. So Sahu, there is no limit कि lifetime में कितनी बार अपॉइंट हो सकता है. 5 years के लिए अपॉइंट किया, 5 years का कूलिंग पीरियड, फिर 5 years के लिए, फिर 5 years का कूलिंग पीरियड. ठीक है साहू? So ऐसे लाइफ टाइम का कोई वो नहीं है. ठीक है. So now let us revise this rule again and just try to learn it as a story. ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अगर ट्रैम करोगे लैंग्वेज को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. Just when you have understood the story, हाँ, then the language will come automatically. ठीक है साहू, is it clear? ठीक है, देखो, कंपनी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट. अच्छा वेट, waiver be rule 3. ठीक है. So manner and procedure. So manner and procedure of selection and appointment of auditor, rule 3 of the Companies Audit and Auditor Rules 2014. So company required to constitute an audit committee. So यहाँ and cases where company is not required to constitute an audit committee. So here audit committee and here board.
क्या करेंगे? They shall consider the qualification and experience of auditor, and they shall see whether such qualification and experience, I'm not able to write on this sheet, Hana, so just be with me. Whether such qualification and experience are commensurate. Commensurate means adequate with the size and requirements of the company. And audit committee or the board, as the case may be, may call for such information from the proposed auditors. Clear? In case the company is required to constitute audit committee shall recommend the name of the auditor to the board for consideration. और जहां ऑडिट कमिटी नहीं है वहां पे बोर्ड अपना ही बोर्ड शैल कंसीडर एंड रिकमेंड द ऑडिटर 2 members in the AGM for appointment. Clear? जहां पर ऑडिट कमिटी है ऑडिट कमिटी will recommend the name of to the board for consideration. There can be 2 situations, board agrees, board disagrees. ठीक है? अगर बोर्ड डिसअग्री करता है तो बोर्ड शैल रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द ऑडिट कमिटी फॉर रिकंसिडरेशन साइटिंग द रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट कि भाई हमें नहीं समझ आ रहा, और जहां बोर्ड अग्री कर लेता है तो एजीएम में वही नाम मेंबर्स को दे देगा. ठीक है? अब जहां पर रेफर बैक किया है देयर कैन बी 2 सिचुएशंस कि ऑडिट कमिटी कह देता है कि आई विल नॉट रिकंसीडर, मेरे को तो एबीसी एंड एसोसिएट्स को ही ज्वाइन करना है, को ही रिकमेंड करना है. Now here there can be 2 situations. Either board will agree कि चलो ठीक है, you are not agreeing, चलो ठीक है. तो if board agrees with the recommendation of audit committee, it shall place the matter for consideration by members in the AGM. लेकिन अगर board को अभी भी disagreement है तो board will record the reasons for disagreement and send its own recommendation for consideration to the members in the AGM. So quickly tell me, clear है? And these capsules, Aditi, yes, you can learn from these capsules. These are summaries. Capsule form मतलब क्या होता है? Summarized form में है entire chapter. See, in fact, today I have taken most of the summary from this chapter, from this capsule only. So beautifully presented the entire chapter. And yes, if you can see at the start of this this capsule, wait. See, just read this before. See, what is it has always been the endeavor of Board of Studies to provide quality academic inputs to the students of Chartered Accountancy course. Keeping this in mind, Board of Study has decided to come out with crisp and concise capsule on paper number 6 to facilitate students for quick revision before examination. It is mentioned that this capsule is a tool for quick revision of some significant areas, and this should not be taken as a substitute for detailed study of the subject. Students are advised to refer to relevant study material, practice manual, RTP for comprehensive study and what revision. Aditi, now your doubt is clear? Yes, you can learn from these capsules, but obviously your base is the module. These are for your revision purpose. Quickly revise हो गया ना rule number 3. ठीक है? तो बहुत रिसर्च के बाद आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्किंग दीज कैप्सूल्स हैव बीन मेड ओनली फॉर यू पीपल. ठीक है? कहाँ है ये? बोर्ड ऑफ स्टडीज में आप BOS नॉलेज पोर्टल में जाओगे, देन सब्जेक्ट वाइज कैप्सूल है ना. सो फॉर योर रिविजन है ना, क्विक रिविजन, बर्ड्स आई व्यू देते हैं आपको ये एंटायर सेक्शन का, वेरी ब्यूटिफुली रिटन. यू कैन ऑलवेज यूज दिस कैप्सूल्स. क्लियर? So Aditi, is your doubt clear? Rule 3, is it clear? So after completing rule 3, now with the completion of rule 3, we have completed section 139 also. Is it clear? ठीक है? Student, these are the facilities which has been provided by the Institute Board of Studies for your help. है ना? बहुत मेहनत करके बने हैं ये capsules. So you can always make use of these capsules. ठीक है? चलो, now let us go to section 140 now. So in our module today we have completed section 139.
ठीक है. And now let us move on to section 140. So what is the name? Removal, resignation of auditor and giving of special notice. Resignation of auditor we have already covered in section 140 subsection 2 and 3. सबसेक्शन 2 में तो क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दी ऑडिटर ना कि एडीटी 3 फाइल करना है आरओसी के साथ, रजिस्ट्रार के साथ एंड गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी के साथ भी विद इन 30 डेज स्टेट करना है रीजंस एंड फैक्ट्स. और 140 सबसेक्शन 3 में क्या था, नहीं किया तो पेनल्टी होगी 50,000 और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस and 500 for per day for continuing default subject to a maximum of what 2 lakhs. देखो ऐसे याद करना है. अब क्या टफ है इसमें, है ना. Now we'll be doing removal and giving a special notice. ठीक है. So students, there are total 5 subsections, है ना, and we all have done this subsection 2 and subsection 3 of section 140 along with rule 8 and ADT 3. Clear? Is it clear? Quickly send in your replies. Is it clear? Let me just have a look at your queries and quickly send in. Can we proceed with section 140? So Karthik, that is not possible. ठीक है. तो सिद्धार्थ, Smita and Ben Reddy are saying yes, ma'am, clear. Now we will start with section 140 subsection 1. Removal of auditor before expiry of the term, है ना. So resignation में तो क्या है कि auditor is saying कि मेरे को काम नहीं करना है. Before 5 years he is saying I am resigning, I cannot work. कि let's say information नहीं मिल रहा है या whatever is the reason, auditor is saying कि I am resigning. ठीक है. I am not in a position to continue. Removal of auditor before expiry of the term. Section 140 subsection 1. ठीक है. Now see, removal of the auditor before expiry of the term. ठीक है. So the company is removing the auditor before, in case of an individual, before 5 years, and in case individual as an auditor before 5 years, completion of 5 years, and in case of an audit firm before 2 terms of 5 consecutive years. तो जस्ट टेल मी, क्या वो ऐसे ही पॉसिबल हो जाएगा क्या? कभी भी कंपनी आके बोल देगी क्या ऑडिटर को कि ऑडिटर ठीक है बस अब नहीं करना काम, अब हम वी विल अपॉइंट समवन एल्स? इज इट सो सिंपल? कैन इट बी सो सिंपल? बताओ. क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज. कंपनी के ऊपर भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना. ऐसे थोड़ी ना सीएज हैं यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई भी आके कभी भी कह देगा कि अब काम कर लो, अब आके काम मत करो. बताओ. क्विकली टेल मी, क्या आपको क्या लगता है क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और फर्म को बोल देगा ठीक है कल से मत आना? बताओ. नीलाब्जो, सेंड योर क्वेरी अगेन. बस आपका यस मैम दिख रहा है, क्वेरी तो कोई नहीं दिख रहा. ठीक है. So it is not that simple. If the auditor is to be removed before the expiry of the term, provisions of section 140 subsection 1 will come into picture. ठीक है. And students, removing an auditor who has been appointed under section 139 requires a prior approval of the central government. It requires a special resolution to be passed by the members. It requires the company to give the auditor an opportunity of being heard. है ना. ऐसे तो कोई भी आके कभी भी ऑडिटर को बोल देगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेट्स से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है some fraud is there. The auditor wants to report that fraud. But board of director क्या कर रहा है कि ठीक है, you go, I'll appoint someone else. है ना. So that is why these provisions have been made. There are strict conditions that if a company is removing the auditor before the expiry of the term, prior approval of the central government, special resolution from the in the AGM, and then opportunity of being heard to be given to the auditor. ठीक है. So what are the steps? इसको भी logically समझो,
है ना, and you will be able to learn all these things. So first of all, a board meeting will be there for deciding removal ki the board wants to remove that auditor, and authorizing the filing of application to CG कि ठीक है, now it has been decided कि remove करना है, तो first of all the application will be filed to the CG, तो वो authorize होगा board meeting में. When the same has been authorized in the board meeting, within 30 days of the board meeting, application will be made to the CG along with the fees. And where is it mentioned? In Rule 7 of the Companies Audit and Auditor Rule 2014 and ADT 2 will be filed. Okay? Once the approval of the central government is obtained, within 60 days of the receipt of central government approval, a general meeting will be held within 60 days to pass a special resolution, and before passing a special resolution, a reasonable opportunity of being heard will be given to the auditor. Simple है. Just try to understand कि इतना simple नहीं है, as in कि remove करना इतना simple नहीं है. तो बोर्ड मीटिंग में सिर्फ बोर्ड मीटिंग करके आप रिमूव नहीं कर सकते. हाँ, बोर्ड मीटिंग में आप ऑथराइज करो कि ठीक है, एप्लीकेशन टू सीजी विल बी डन. वंस द बोर्ड मीटिंग इज डन ऑथराइजिंग द एप्लीकेशन टू बी मेड टू सीजी, विद इन 30 डेज एप्लीकेशन करना है सीजी को. सीजी को एप्लीकेशन करना है किसमें? एडीटी 2 में, रूल 7 के अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद द फीस. जब अप्रूवल आ गया, उसकी सीजी का अप्रूवल आ गया, विद इन 60 डेज बोर्ड मीटिंग करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है. बट स्पेशल रेजोल्यूशन से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द ऑडिटर देना है. ठीक है. नाउ आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि एडीटी 2 में हैंग ना हो. चलो ठीक है. देखो, जस्ट फॉर योर understanding, I am showing these forms. As such, you can also download these forms from Google. तो फॉर्म ADT 2 क्या है? एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म. टर्म कौन सा? 5 years वाला या 2 terms of 5 consecutive years का. So rule 7 में है ना, of CAR 2014, as it is, whatever you are studying is actually practically implemented. So what is the corporate identity number of the company, all those numbers, the registered office email ID of these. ठीक है. Now, a special resolution, just a minute. Details of the application clearly indicating the grounds for seeking removal of auditor. The company needs to mention here what are the grounds, किस basis पे हटाना है. Whether the accounts have been qualified during the last year, if yes, then mention. Whether opportunity of being heard has been given, है ना. Civil criminal proceedings तो नहीं है. ठीक है. स्पेशल नोटिस था या नहीं. जब हम 140 सबसेक्शन 4 कर लेंगे ना, तभी स्पेशल नोटिस का पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा. कोई ऑडिट फी तो पेंडिंग नहीं है, कोई अदर सर्विसेज तो नहीं रेंडर की है. ऑडिट का पेंडेंसी क्या है, स्टेज ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी क्या है, सब कुछ बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है. ऐसे थोड़ी ना रिमूव कर दोगे. तो दिस इज व्हाट ADT 2 फॉर रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म. क्लियर? Just for your better understanding, I am showing you practical forms. ठीक है. So now let us go to section 140, subsection 1 again. So we are discussing removal of auditor before expiry of term. ठीक है. So first of all, a board meeting for deciding the removal and authorizing filing of application with CG. Application will be made to CG along with the fees. ADT 2 will be filed. Rule 7 में mentioned है. Approval आने के बाद within 60 days आपको GM करना है, जहां पे members approve करेंगे special resolution से. But before that, opportunity of being heard will be given to the auditor. ठीक है. Let us have a look at this from your module, and then our section 140 subsection 1 will be done. ठीक है. So see, removal of auditor before expiry of the term. According to section 140 subsection 1, the auditor appointed under section 139. So it covers all the auditor ना, कि casual vacancy आ गया आपका 139, 1, 5, 6, 7,
है ना, may be removed from his office before expiry of term only by what special resolution of the company after obtaining previous approval of the CG in that behalf as per Rule 7. The application to CG for removal of auditor shall be made in ADT 2 and shall be accompanied with the fees as per the company's registration offices and fees full 2014. The application shall be made to CG within 30 days of the resolution passed by board. पहले board resolution pass करेगा ना, authorizing the filing of application with the CG. The company shall hold off the general meeting within 60 days of receipt of approval of CG for passing special resolution. It is important to note that before taking any action for removal before expiry of terms, the auditor concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard. ऐसे थोड़ी ना हटा दोगे, reasonable opportunity of being heard will be given. ठीक है? Yes, Nilabjo, you can very well refer to the capsules with respect to all the chapters that are given in the capsule, so far as auditing is concerned. ठीक है? Is it clear? Is section 140 subsection 1 clear? ठीक है? तो let us have a look at this. So section 140 subsection 1 क्या बोलता है? कि if the company is removing the auditor before expiry of the term, so first of all, previous approval of CG is required and special resolution is required and opportunity of being earned देना है. क्या टाइम पीरियड है? अगर बोर्ड ने रिजॉल्व किया कि ठीक है हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं सीजी को फॉर रिमूवल ऑफ द ऑडिटर, एडीटी 2 is to be filed stating the reasons. क्या रीजंस हैं, कितना पेंडिंग वर्क चल रहा है, कितना ऑडिट फीस ड्यू है. देखा ना अभी हमने फॉर्म एडीटी 2 कहाँ मेंशन है? रूल 7 में. 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन देना है. जब अप्रूवल आ जाएगा सीजी से विद इन 60 डेज जीएम हेल्ड करके उसमें एसआर पास करना, और एसआर से पहले आपको क्या करना है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है. किसको? ऑडिटर को. जस्ट रिमेंबर द की पॉइंट्स कि प्रीवियस अप्रूवल चाहिए, एसआर चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड चाहिए, एडीटी 2 चाहिए, रूल 7 है, 30 डेज एंड 60 डेज. डन. ठीक है. सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर. वहां पर हमने क्या पढ़ाया था? अगर ऑडिटर भी थोड़ी ना ऐसे बोल सकता है मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं काम कर रहा. ऑडिटर थोड़ी ना ऐसे बोल सकता है. ऑडिटर के पास भी तो कुछ रीजंस होंगे ना. ऑडिटर भी तो इन्फॉर्म करेगा ना. तो ऑडिटर को कितना टाइम पीरियड दिया गया? ऑडिटर को 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया कि 30 डेज फ्रॉम दी रेजिग्नेशन एडीटी 3 फाइल करना है आरओसी के साथ, कंपनी के साथ, गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी के साथ भी, जहां पे रीजंस एंड फैक्ट्स बताने हैं. नहीं करोगे तो 140 सबसेक्शन 3 में क्या आ जाएगा? अच्छा एडीटी 3 फाइल करना है, कहाँ लिखा है? रूल 8 में. नहीं फाइल करोगे तो 50,000 और रेम्यूनरेशन whichever is less. Continuing default है तो 500 per day subject to a maximum of what? 2 lakhs. That's it. ठीक है? Clear? Is it clear? Are you all finding it easy to understand and learn? Also quickly send in your replies. Then we will move on to subsection 5 first. Then I'll take you to subsection 4. Send in your replies. I'm waiting for your replies. Send in your replies. समझ आ रहा है? लर्न हो रहा है कुछ? ये समरीज हेल्प कर रही हैं आपको? ठीक है. नाउ सेक्शन 140 सबसेक्शन 5. ठीक है. इट रिलेट्स टू डायरेक्शन बाय ट्रिब्यूनल. एनसीएलटी अगर कुछ डायरेक्शन देता है तो क्या होगा? ठीक है. नाउ इफ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड, इट सेज कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये जो ऑडिटर है ना, ही हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टेड इन अ फ्रॉड्यूलेंट मैनर, कुछ फ्रॉड किया है, और अबेटेड इज व्हाट? इंस्टिगेट, किसी को उकसाना फ्रॉड करने के लिए, और कल्यूडेड इन फ्रॉड, किसी के साथ कल्यूड इज व्हाट? मिली भगत, किसी के साथ मिलकर फ्रॉड किया है. तो अगर उसने खुद से एक्ट किया है फ्रॉडुलेंट मैनर में, अबेटेड किसी को इंस्टिगेट, किसी को उकसाना कि तुम करो फ्रॉड, या कल्यूड किया है फ्रॉड में, इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड. कैसे? इधर सीओ मोटो, ट्रिब्यूनल को खुद से लगता है, या इफ एप्लीकेशन इज मेड टू ट्रिब्यूनल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इफ एप्लीकेशन इज मेड बाय एनी पर्सन कंसर्न, कोई भी मे बी कंपनी ऑफिसर है
employee, officer of the company, if any application is made. And tribunal को लगता है कि भाई directly or indirectly auditor is involved, he has acted fraudulently और abated का क्या मतलब होता है, किसी को instigate, किसी को उकसाना या collude किया है. Tribunal will say straight away direct the company कि भाई change the auditor because I am satisfied कि auditor ने कुछ तो गड़बड़ की है. Clear? Now it says that जहां पर एप्लीकेशन बाय सीजी आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, ठीक है, यू ऑल हैव डन फ्रॉड, है ना, तो सीजी को एप्लीकेशन कब देते हैं? क्विकली टेल मी, यू ऑल हैव डन चैप्टर नंबर 5, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कब इन्फॉर्म करते हैं? वैसे दैट इज अ फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर, ठीक है, बट आई वांट टू टेल यू वन लॉजिक फ्रॉम हियर. Quickly tell me. So Nilabjo is saying, ma'am, we are logically understanding everything clearly. That is good. देखो, अगर एप्लीकेशन बाय सीजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी है ट्रिब्यूनल को, ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आई है, इट माइट बी पॉसिबल ना दैट ह्यूज अमाउंट और ह्यूज फ्रॉड इज इन्वॉल्व, है ना. तो in that case, within 15 days of receipt of that application, within 15 days of the receipt of the application, the tribunal shall make an order that such auditor shall not function as an auditor. 15 days के अंदर बोल देंगे कि भाई you will not act as an auditor, and it will direct, the tribunal will direct the CG that you will appoint another auditor. समझ आता है ना? That if such is the intensity of the fraud that CG has informed the tribunal that such and such fraud has been committed, so फिर तो immediately within 15 days of the receipt of such application, tribunal will make an order that this auditor is not going to act as an auditor, and it will direct the auditor that CG may appoint another auditor. Clear? Now, if the auditor is removed, if the auditor is removed by the order of the tribunal, then such auditor shall not be eligible to be appointed as an auditor of any company, not only this company जहां पर fraud हुआ है, but of any company for a period of 5 years, and penal provisions as per section 447 will be applicable on the auditor. Clear? Let us look at this again and again as a story. Logically so जो समझ आ जाएगा. जहां पर ट्रिब्यूनल इधर suo moto is what? On its own, ठीक है, और एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन कंसर्न, इट कैन बी ऑफिसर, डायरेक्टर, कोई भी हो सकता है. इफ इट इज सैटिस्फाइड कि ऑडिटर इज हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, खुद से किया है फ्रॉड, अबेटेड, किसी को उकसाया है, किसी को इंस्टिगेट किया है कि तुम फ्रॉड करो, या कल्यूडेड इन फ्रॉड, कि मिली भगत करके किसी के साथ भी, ऑफिसर एम्प्लॉय के साथ भी फ्रॉड किया है, तो इट विल डायरेक्ट द कंपनी की भाई चेंज कर दो इस ऑडिटर को, ठीक है. However, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के यहां से आई है एप्लीकेशन, तो विद इन 15 days इट विल डायरेक्ट दैट इट शैल नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर एंड सीजी में अपॉइंट अनदर ऑडिटर, ठीक है. एंड if the auditor is removed because of the order of tribunal, then such auditor is not eligible to be appointed as auditor of any company for a period of 5 years, and the penal provisions as per section 447 shall apply. बताओ, क्लियर है? कोई डाउट है? So देखो, direction by tribunal in case of auditor acted in a fraudulent manner. So as per subsection 5 of section 140, the tribunal either suo moto, that is on its own, or an application made to it by CG or by any person concerned, if it is satisfied, it मतलब कौन है? The tribunal is satisfied that auditor of the company has whether directly or indirectly acted in fraudulent manner, abated is what? किसी को उकसाना, colluded in fraud in relation to the company or its director or officer. इट कौन है? ट्रिब्यूनल में बाय ऑर्डर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर, ठीक है. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, मतलब इंटेंसिटी बहुत हाई है ना, फ्रॉड हो सकता है, वैल्यू भी ज्यादा हो सकता है, बहुत huge fraud has been committed, and the tribunal is satisfied that any change of auditor is required, it shall within
15 days of receipt of such application make an order that he कौन है auditor और it कौन हो जाएगा the audit firm shall not function as an auditor and the central government may appoint another auditor in his place. It may be noted that an auditor, whether individual or firm, against whom final order has been passed by tribunal under this section shall not be eligible to be appointed as an auditor of any company. You may get a true false कि उसी company में appoint नहीं हो सकता कहीं और हो सकता है. So the answer is false. Any company for a period of 5 years from the date of passing of the order, and the auditor shall be liable to action under section 447 and students under section 447. As such, it is not in detail here, but the fine amount may extend up to what 3 times of the fraud amount, and there is imprisonment also. ठीक है? So this was section 140 subsection 5. ठीक है? Clear? Clear? Quickly send in your replies. So this was section 140 subsection 5. जहां ट्रिब्यूनल को लगता है कि ऑडिटर हैज acted in a fraudulent manner, abated or colluded. So we have done section 140 subsection 5 also. Quickly sending a reply. Then we will be doing section 140 subsection 4, and with that we would have completed 3 very important sections: 139, 140, 141. This entire chapter is very, very important. Don't take it lightly. Okay? Section 140 subsection 4, what is it is related to appointing auditor other than retiring auditor. So subsections relating to. So basically 140 section 140 ka name you need to learn. What is the name? Removal, resignation and giving of special notice. अब please do not ask me कि ये भी लिखना है वो भी learn करना है. देखो जितना learn कर सकते हैं करो. हाँ, do not mention wrong names or wrong section numbers. ठीक है? Person concerned can be any officer of the company ना, है ना? See वहाँ क्या लिखा है? Whose query is it? Audit. देखो यहाँ क्या लिखा है? Fraudulent manner in relation to the company or its director or officer. तो ये भी तो concerned person हो सकते हैं ना? ठीक है Aditi, is it clear? ठीक है. Now section 140 subsection 4, appointment of auditor other than retiring auditor. ठीक है. So अभी 140 subsection 1 में क्या बोला कि existing auditor को remove कर रहे हैं before the expiry. अब क्या रिमूव करके किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे? करेंगे ना. तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. So first of all, this section is applicable where section 139 subsection 2 is not applicable. क्योंकि देखो 139 subsection 2 है, वहां तो टेन्योर ओवर हो गया ना, वहां तो किसी और को ही अपॉइंट करोगे ना. 139 subsection 2 क्या है? रिलेटिंग टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर. तो जब let's say we will take example of what individual as an auditor, तो यहां पर कितना टाइम पीरियड था? 5 years का था. ठीक है. तो जब यहां पर 139 subsection 2 के अकॉर्डिंग तो अपॉइंटमेंट ऑफ अदर ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर ही होगा ना. तो यहां पर कोई स्पेशल नोटिस या यहां पर कुछ नहीं चाहिए. ठीक है. सो ये कब है? when the individual who is not been reappointed, उसका 139 subsection 2 के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है. So basically before the expiry of the term, the company has received a special notice from the members. Section 115 में special notice receive होता है ना from a requisite number of members. और members ने क्या लिख के दिया? Yes, Hitesh, you are correct. Person can be those charged with governance also. Okay. So special notice 115 का होता है ना, section 115 में. So where the company had received a special notice that the existing auditor shall not be appointed, or providing that some other auditor will be appointed. ठीक है. Now let me just link this with section 139. Be with me. Everything is going to be very, very clear to all of you.
So when we did section 139 subsection 9 है ना, यहाँ क्या था, a retiring auditor may be reappointed at an annual general meeting if, उसको कब reappoint कर सकते हैं, if he is not disqualified, if he has not given a notice in writing of his unwillingness to be reappointed, मतलब resignation नहीं फाइल किया, 140 subsection 2. A special resolution has not been passed at that meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed. मतलब section 140 subsection 4 नहीं हुआ. समझ आया? एक ऑडिटर, रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो जाएगा. Let's say I gave you example of what 2 terms of 5 consecutive year होता है ना, तो when you're reappointing that firm, तो उसको तभी reappoint कर सकते हो अगर वो disqualified नहीं है या उसने खुद से रिजाइन नहीं किया है, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, या कंपनी खुद से नहीं कह रहा कि भाई हमें नहीं अपॉइंट करना, मतलब सेक्शन 140 सबसेक्शन 4. क्लियर? ठीक है. एंड आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि ये क्लियर आपको कब होगा, जब हम करेंगे 140 सबसेक्शन 4. ठीक है. तो 140 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है देखते हैं. ठीक है. सो बेसिकली जहां टर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि टर्म कंप्लीट हो गया फिर तो बट ऑब्वियस है ना कि रिटायरिंग ऑडिटर को तो करना नहीं है अपॉइंट, क्योंकि उसका टर्म कंप्लीट हो गया है. ठीक है. तो वहां पे दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल. वहां तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा. ठीक है. नाउ इफ अ स्पेशल नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय द रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 115, that this auditor, specifically mentioning that the retiring person shall not be reappointed or expressly providing that some other audit firm is to be appointed, तो क्या करना है? On receipt of such notice, कंपनी को नोटिस मिला, स्पेशल नोटिस फ्रॉम द मेंबर्स कि इसको नहीं अपॉइंट करना, किसी और को अपॉइंट करना है, तो सबसे पहले तो कंपनी क्या करेगी, वो जो नोटिस आया ना उसका कॉपी किसको भेज देगी, रिटायरिंग ऑडिटर को, कि देखो भाई ये हुआ है. सो ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस ऑफ सच अ रेजोल्यूशन, द कंपनी शैल फॉरवर्ड सेंड अ कॉपी ऑफ दिस, सेंड अ कॉपी देयर ऑफ टू द रिटायरिंग ऑडिटर, कि देखो तुम्हें अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें स्पेशल नोटिस मिला है सेक्शन 115 के अंदर. क्लियर है? ठीक है. When the auditor will receive such a notice, अब ऑडिटर यहाँ रिजाइन नहीं कर रहा है ना, उसको कंपनी हटा रही है ना पहले ही, तो ऑडिटर को भी तो होगा ना कि मुझे कुछ बोलना है. सो ऑडिटर विल सेंड अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, कि ऑडिटर भी तो लिख के देगा ना, कंपनी ने लिख के दिया है कि सेक्शन 115 का ये नोटिस है कि इस वजह से आपको हटा रहे हैं. नाउ ऑडिटर विल ऑल्सो सेंड अ रिप्रेजेंटेशन ना कि भाई ये है बात, देख लो आप. तो क्या वर्ड है, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग. ठीक है. कंपनी की ड्यूटी हम डिस्कस कर रहे हैं. कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिला स्पेशल नोटिस, वो किसको भेज देंगे, ऑडिटर को. अब ऑडिटर विल मेक व्हाट, अ रिप्रेजेंटेशन इज इन राइटिंग, एंड ऑडिटर विल रिक्वेस्ट द कंपनी कि जो मैंने रिप्रेजेंटेशन भेजा है ना, यू सेंड इट टू ऑल द शेयर होल्डर्स, टू ऑल द मेंबर्स to whom you are sending the notice for the AGM. आप जिसको भी नोटिस भेज रहे हो AGM के लिए, आप उन सबको ये वाला रिप्रेजेंटेशन सेंड करो. ठीक है. एंड whatever notice has been sent to the members of the company, उन सब नोटिस में it will be mentioned that a representation has been made and the representation will also be attached. अभी स्टोरी की तरह समझो, डाउट्स मत पूछना, बाद में पूछना. ठीक है. समझ आता है? कंपनी ने इन्फॉर्म किया ऑडिटर को कि देखो भाई तुम्हें नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, ये स्पेशल नोटिस आया. ऑडिटर कहता है ठीक है, ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है, ये मेरे को बोलना है. ये रिप्रेजेंटेशन आपका जो भी नोटिस जा रहा है मीटिंग के लिए, उसमें मेंशन कर दो कि मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया है, साथ में इस रिप्रेजेंटेशन को यू सेंड इट टू ऑल द मेंबर्स. ठीक है. हाउएवर, if the representation could not be sent, क्योंकि नोटिस ऑफ द मीटिंग पहले ही जा चुका था. ठीक है. या मे बी ऑडिटर ने, कंपनी की फॉल्ट है या ऑडिटर की फॉल्ट है, किसी का भी फॉल्ट है, अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं गया तो क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो ऑडिटर को मिलेगा ही कंपनी में. ठीक है.
प्लस दैट रिप्रेजेंटेशन जहां पे ऑडिटर ने अपनी बात बोली है, दैट शैल बी रेड आउट एट द मीटिंग। किस भी वजह से, बिकॉज वो ऑडिटर ने लेट भेजा या कंपनी का फॉल्ट है, कंपनी ने नहीं भेजा, तो व्हाट इज द safeguard available to the auditor कि वो जो representation है that will be read out at the meeting along with the opportunity of being heard। वो तो है ही है opportunity of being heard to the auditor, but एक representation will be read out। Also, if the representation is not sent to the members, है ना, then it shall be a copy of such representation shall be sent to the registrar of the companies। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना उसको रिमूव कर दोगे, ऐसे तो ना ऑडिटर को बोल देंगे कि बस अब तुम्हें नहीं हम अपॉइंट कर सकते, we will be appointing some other auditor though your tenure has not been completed। तो ऑडिटर को पहले बताएंगे कि ऐसा स्पेशल नोटिस आया, ऑडिटर भी तो लिख के देगा ना कि ऐसे कैसे, दिस इज माय रिप्रेजेंटेशन। जो भी आप नोटिस भेज रहे हो मेंबर्स को फॉर द मीटिंग, फॉर द जनरल मीटिंग्स, मेंशन दिस फैक्ट कि मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया एंड सेंड अ कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर्स। अब अगर नहीं गया रिप्रेजेंटेशन बिकॉज इट वाज रिसीव टू लेट या ऑडिटर या कंपनी के फॉल्ट था, तो कुछ नहीं होता, इट शैल बी रेड आउट एट द मीटिंग प्लस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो मिलेगी ही कंपनी को, ऑडिटर को। फर्दर इट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, नाउ वन मोर पॉइंट इज देयर, इफ एन एप्लीकेशन इज मेड टू द ट्रिब्यूनल, अगर कंपनी ने या कोई भी अग्रीवीड पर्सन जैसे डायरेक्टर ने या कोई भी ऑफिसर ने, इफ दे हैव मेड एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल कि ट्रिब्यूनल सुनो, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इट इज बिन दिस power to make a representation, this right to make a representation is been abused by the auditor, मतलब he is using it for a wrong reason, for a wrong purpose, he is disclosing, let's say he is disclosing certain information that is not supposed to be disclosed, he is abusing क्या होता है, using in inappropriate way। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल में से that such copy of representation will not be sent and it will not be read out at the meeting। अगर आपको कोई राइट दिया है और ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड, अच्छा सिर्फ एप्लीकेशन पे नहीं, ट्रिब्यूनल को भी लगता है, ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो सेटिस्फाइड कि दिस ऑडिटर इज अब्यूजिंग दिस राइट, सो क्या होगा, कर्टेल कर देंगे that this representation will not be sent and the representation will not be read out at the meeting। ठीक है, क्लियर है। अभी we will look at this section from the summary that I have made and from the module, then it is going to be more clear to you। So अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, section 140 subsection 4। एक yes no तो भेज दो, I'll be able to know whether you are still with me or not। I know it is already 8:33, but another 5-10 minutes then I'll end this session, so please send कि थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा ना। And Hitesh, you also send whether your doubt is clear। So section 140 subsection 4, appointment of auditor other than retiring auditor, but ये 132 पे 139 subsection 2 पर applicable नहीं है। वहां तो 139 सबसेक्शन 2 में तो दिस इज बट ऑब्वियस ना कि रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे ही नहीं, बिकॉज उसका टर्म कंप्लीट हो चुका है। ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं जहां रिटायरिंग है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं, एक टर्म ही हुआ है और अब आप किसी और को अपॉइंट कर रहे हो, इनको अपॉइंट नहीं कर रहे। ठीक है, सो मैनी ऑफ यू आर सेइंग यस मैम हम यही हैं, चलो गुड। ठीक है, सो देखो, a special notice is required for resolution at AGM for what? Appointing a person other than a retiring auditor or providing expressly that retiring auditor shall not be reappointed। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, स्पेशल नोटिस चाहिए। On receipt of special notice, company shall send a copy of to retiring auditor। This RA is what? Retiring auditor। रिटायरिंग ऑडिटर ये क्या है, रिटायरिंग ऑडिटर शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में मत लिखना, फॉर योर अंडर, मतलब समझ गए ना, एग्जाम में नहीं लिखना। रिटायरिंग ऑडिटर को जब मिल गया, he shall make a representation is in writing plus request its notification to the members। ठीक है,
कंपनी नोटिफिकेशन मतलब मेंबर्स को बता दो कि मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है. कंपनी शैल स्टेट द फैक्ट दैट रिप्रेजेंटेशन इज मेड in the notice of the meeting में लिखेंगे and send a copy of representation to every member. However, if could not be sent because it was received too late और कंपनी का डिफॉल्ट था, then auditor may require representation to be read out at the meeting कि उसको रीड करना है, plus opportunity of being heard तो देना ही है, plus copy will be sent to the registrar. If tribunal is satisfied कि on an application by the company or any aggrieved क्या होता है? Angry person है ना, ऑफिसर है, किसी कोई भी कंसर्न पर्सन है, दैट द राइट टू रिप्रेजेंटेशन इज बीन अब्यूज्ड मतलब बीइंग यूज्ड इन एन इनएप्रोप्रिएट वे. ठीक है, सो ट्रिब्यूनल में ऑर्डर दैट कॉपी नीड नॉट बी सेंड एंड इट नीड नॉट बी रेड आउट. ठीक है, सो विद दिस वी हैव डन सेक्शन 140 subsection 4 also. Let me just have a quick look at your queries. Then next 5 minutes we'll revise entire section 140. Then we will finish up the class. नहीं साक्षी, अगर 10 कंप्लीट हो गया है और आप कह रहे हो कोई ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो यही कंटिन्यू करेगा, ये नहीं करेगा कंटिन्यू. एटलीस्ट जहां पर भी सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 अप्लाई होता है उन केस में 5 इयर्स के बाद 5 इयर्स का कूलिंग पीरियड देना ही पड़ेगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर, है ना. तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 तो स्पेसिफिक सेक्शन है ना फॉर द लिस्टेड फॉर द कंपनीज दैट हैव बीन मेंशन्ड इन रूल 5, तो वो तो एप्लीकेबल होगा ही होगा. विद रिस्पेक्ट टू अदर कंपनी सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 सेक्शन 139 सबसेक्शन 10 दे मे बी एप्लीकेबल. क्लियर साक्षी? ठीक है, so quickly, so we started with section 140. What is the name? Removal, resignation and giving of special notice. So section 140 subsection 1 क्या बोलता है? That अगर remove करना है ऑडिटर को before the expiry of term, तो क्या करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग होगा जहां पर you will authorize, the company will authorize कि सीजी को एप्लीकेशन करते हैं. विद इन 30 डेज सीजी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा एडीटी 2 में फीस के साथ. कहाँ लिखा है? रूल 7 में. जब और 30 डेज के अंदर बोर्ड मीटिंग से जब अप्रूवल आ गया तो विद इन 60 डेज आपको जनरल मीटिंग में उसको स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करना पड़ेगा. बिफोर दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा टू द ऑडिटर. सिंपल. सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? ऑडिटर ऐसे रिजाइन नहीं कर सकते हो. रिजाइन करना है तो 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रेजिग्नेशन में आपको एडीटी 3 में इन्फॉर्म करना पड़ेगा. किसको? कंपनी को, आरओसी को एंड सीएजी को अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी का केस है. कहाँ लिखा है? रूल 8 में लिखा है. जहां पे आप रीजंस एंड फैक्ट स्टेट करोगे. नहीं करते तो 140 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि रेम्यूनरेशन ऑफ 50,000 whichever is less, 500 for continuing default, 500 per day for continuing default, subject to a maximum of 2 lakhs are the penal provision for auditor. Clear? 140 subsection 4 क्या बोलता है? अगर auditor, if special notice is received, specifically mention that this auditor will not be reappointed or appointing providing expressly that some other auditor will be appointed. So जब वो नोटिस मिलता है तो कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को, देखो वो रिटायर हो रहा था, अब उसको रिपॉइंट नहीं कर रहे, बट 139 सबसेक्शन 2 नहीं है ना, तो उसको इन्फॉर्म करेंगे ना कि देखो ऐसे ऐसे हुआ. ऑडिटर अपना क्या देगा? रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग देगा एंड रिक्वेस्ट करेगा कि भाई नोटिफाई कर दो मेंबर्स को कि मैंने ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया. जो भी नोटिस जाएगा मीटिंग में उसमें मेंशन होगा प्लस रिप्रेजेंटेशन भी सेंड होगा. इफ रिप्रेजेंटेशन कुड नॉट बी सेंड ईदर बिकॉज इट वाज रिसीव्ड टू लेट या कंपनी का डिफॉल्ट है तो डजंट मैटर, इट शैल बी रेड आउट एट द मीटिंग प्लस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो है ही, प्लस रजिस्ट्रार के साथ भी फाइल होगा. अगर ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी और बाय एग्रीवीड पर्सन कि जो राइट है टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन it has been abused, used in an inappropriate way, तो ट्रिब्यूनल में curtail, the word uses curtailment, कि उसको क्रॉस कर देंगे, curtail कर देंगे, नलीफाई कर देंगे उस राइट को. कैसे? कि ना वो रेड आउट होगा ना वो कॉपी किसी को सेंड करे. सिंपल. 140 सबसेक्शन 5 जहां ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है सीओ मोटो खुद से और एन एप्लीकेशन बाय सीजी या एनी कंसर्न पर्सन, ठीक है, कि ऑडिटर हैज एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर या अबेट किया है, किसी को इंस्टिगेट किया या कल्यूड किया है, तो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर कर देगा कि भाई इसको हटा दो.
as an auditor. और जहां CG से आए तो within 15 days tribunal will direct that this auditor will not continue as an auditor and will direct the CG that you may appoint another auditor. And if any of the auditor has been removed because of the order of tribunal, so he cannot be appointed as an auditor of any company for a further period of 5 years, and penal provisions of section 447 will be applicable. ठीक है? So I hope section 140 is also clear. ठीक है? अब many of you were saying मैम ये कैसे याद करना है? देखो आपको subsections के name as such learn नहीं करने हैं. ठीक है, हाँ, हाउ टू लर्न द एंटायर सेक्शन की क्या क्या था, तो एक अगर आप माइंड में लेके आओगे कि सेक्शन 141 में 4 सबसेक्शंस थे, उसमें 141 सबसेक्शन 3 में रूल 10 था प्लस 9 क्लॉजेस थे टिल आई, है ना. एक बर्ड्स आई व्यू आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है. सेक्शन 139 में 11 सबसेक्शंस थे, है ना. सेक्शन 140 में 5 सबसेक्शंस है ना. एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है. एंड यस स्टूडेंट्स, यू ऑल कैन वेरी वेल यूज द कैप्सूल्स. दीज आर मेड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड दीज ब्यूटिफुली समराइजेस योर chapters. Various chapters have been covered. ठीक है, but yes, as has been mentioned that base is your module. For quick revision, for getting bird's eye view, you can refer to those capsules. ठीक है, so I am hoping that you all are now clear with section 139, 140 and 141. This chapter is, I'm repeating again, very very important. Go through the module in entirety, including all the illustration, all the case studies. In the next session, I'll take up all your queries in case there are any queries left. Okay? And please tell me before ending for this session whether you have understood or not. कोई भी doubt है, just send it to me. I'll clear it in the next session. Okay? So thank you, and thank you for being a patient listener and giving me extra 12 minutes. Thank you so much. Good night.